a girl should have in order to impress a guy. We go around in a full circle and we say one word each. Huge. Very good. Art. And Massive. ये काटना पड़ेगा. Things you can say in the bedroom and in an interview. Let's begin. I think I'd be great at this position. You can sit right here. अच्छा इधर करके बोलो उसकी आवाज आती नहीं फोन साइलेंट की आवाज आ जानी ये माइक वो नहीं है कि फोन आपका डिस्टर्ब करे हो जाता है थोड़ा बहुत होता है जज़ाकल्लाह Hey guys, what's up? And welcome back to another episode of Honest Hour with Shavi Jaffrey. Today, ladies and gentlemen, we bring you another episode of the infamous, the super infamous, the Londa Talk! यार मेरा तो वो Sorry, तू build up मैं कर करता दोबारा से। Londa Talk we are back बहुत with सारे लॉन्डो का ये favorite. yeah with sorry. yeah, We are yeah. back. Addressing the elephant in the room. I'm Manny G. That's messed up. Bro you missed the joke I did. I wanted to avoid it. There was I wanted to listen to it. मैंने कुछ Addressing the joke नहीं elephant in किया. the room. जरा सा यार cancel तुझे बातें ये कर रहा है. कहावत है. मैंने बस कहावत कह है. दिया. बाहर आई कहावतें सुनाता हूँ दिखाता हूँ. dressing बड़ी कहावतें सुनाऊंगा. ऐसी कौन सी ये कहावतें हैं क्या जो jokes? सुनानी नहीं दिखाई, यानी कि सदीद को वैसे ही सुबह से गर्मी लग रही है, पता है? सदीद ने fish खाई भी. अच्छा इसलिए Anyways, वो शादी भी करना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ब्रो मेरी शादी होगी तो मैं तो किसी से नहीं मिलूंगा उसके बाद ये भी बोला ना तुमने हाँ मैंने तो बोला. या bro. फिर सदीद ने fish खाई भी है. नहीं फिश bro, के अलावा भी अभी और तो बहुत season सारी आने चीजें लगा हैं, है. ज़रार साहब। अभी तो आप season निकला है आएगा. 1980s से। दिल्ली फिश नहीं खाते, गर्मी हो ये जाती जोक है। मुझे बड़ा फनी लगता है हमेशा से कि फिश वाला। फिश वाला. इस जोक के पीछे साइंस क्या है यार, is there actual science behind it कि तूने कभी- गर्म चीजें खाने से गर्म हो जाता है कभी आदमी? फिंगर फिश खाई है? क्या गर्म हो जाता है यानी कि गर्मी चढ़ जाती है यार। इसका Your क्या मतलब है? temperature rise. What does बहुत that गर्मी mean? चढ़ गई है यार. Temperature क्या rises. बुखार हो जाता है नहीं, फिर like हाई गर्मी सदीद नहीं. समझाएगा। Like, सदीद हाँ। बहुत अच्छा समझाता है। You warm up, body temp बढ़ जाता यानी है. एक्सरसाइज के लिए हाँ, अंदर का सूरज जल जाता है. अंदर का सूरज जाग जाता है। जाग जाता है. हाँ। तो सूरज आपका क्या ख्याल है इस बात पे कुछ मैंने इस पे रिसर्च की थी और Of कुछ course. फिश से होता है, सैमन से होता है, बट Really? वो आपका लाइक Swordfish आपको से होता एक्चुअल है। आपका टेम्परेचर नहीं ज्यादा होता. इट्स जस्ट गुड हाँ. फॉर योर टेस्टोस्टेरोन. ये बताया बाय द वे हम सब Oh. दोस्तों को जरार नहीं बताया हुआ है. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन को मैं डिस्क्राइब कैसे ये करूं? तो असल टेस्ट तो ये हो गया. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टिस से कैसे पूछते हैं describe जी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है करें? जी. नहीं यार. गुड सेटअप. बट आई थिंक ऑडियंस को नहीं पता होता ना यार ऐसी चीजें क्या होती हैं तो हाँ. मैं कहता हूँ कभी भी बात सीधी सादी होनी चाहिए कभी भी कोड वर्ड्स में नहीं बात करनी चाहिए कि क्या हाँ. तो टेस्टोस्टेरोन गूगल मार लेना एग्जैक्ट डेफिनेशन. टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जो बॉयज को बॉयज बनाता है अच्छा। और एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो जो girls को गर्ल्स girls को गर्ल्स बनाता है। बनाता है. बट इसके अंदर मजे की बात यह है कि बॉयज में भी एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन होता होता है है, और लड़कियों में भी हाँ. टेस्टोस्टेरोन होता है बॉयज को एक बहुत कॉमन कंडीशन है, उसका नाम है गायनेकोमास्टिया, व्हिच इज आपकी चेस्ट के अंदर वो हो जाता है, इट्स सिस्ट बन जाती है बिकॉज एट सम पॉइंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस आपके 15 to 18 20 वाले ईयर्स के अंदर अगर आपका एस्ट्रोजन किसी पॉइंट पे इम्बैलेंस हो जाए तो फिर इट्स बेसिकली लाइक इट्स टिश्यू द सेम एज अ So you're वुमन्स saying टिश्यू. boys develop breasts नॉट entirely, बस एक छोटी obviously, सिस्ट हो जाती है. cyst हो जाती है so the phenomenon that is known as man boobs is what you're calling Yes. basically Yes. that Gyno? But tissue. there is different. गायनो भी इसको कहते हैं ना? हाँ, gyno short. But I have a question. You also say chicken खाने से भी ये बहुत होता है. तो वो क्या सीन है फिर? वो क्या साइंस? वो मैं बस वैसे कहता हूँ कि हमारे चिकन में बहुत ज्यादा हार्मोन्स वो होते लिटरली हैं. कहता है ब्रो चिकन नहीं खाना. चिकन से ना वो मैन बूब्स बन जाते हैं आपके. चिकन जनरली आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें हार्मोन्स इतने ज्यादा होते हैं, वो आपके हार्मोन्स को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं. इसलिए मुझे ये बंदा पसंद है दिस इज व्हाई चिकन इज तो पाकिस्तानी चिकन की बात करें या चिकन जो ये फार्म टाइप चिकन होता है, मैं बाहर का मुझे नहीं पता, बट पाकिस्तान में तो हावर्ड definitely. ऑर्गेनिक चिकन जो देसी मुर्गी जिसको आप कहते वो हैं. तो इजी
उसमें there's no hormones put जिन into it chickens ना को टीके नहीं लगे हुए वो fit है. हाँ basically But Basically, chickens poultry, are chickens type के poultry products जो हैं farm is dangerous for you. So what about Poultry the farm. chicken? ये जो fake chicken चीजें नहीं बन रही है अमेरिका में अब डेवलप हो रही हैं, like ये जो vegans वाली. हाँ वो वाला चिकन, Oh, वो भी vegan फिर meat. यही होगा, वो Yeah, भी yeah, फिर yeah. Beyond harmful meat type होगा. चीजें Beyond meat. वो नहीं वो प्लांट्स Impossible वगैरह से बनती हैं या उनमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, वो मसले होते हैं. बट इस चिकन वाले से सिर्फ बॉयज़ को प्रॉब्लम्स नहीं होती, गर्ल्स को भी होती हैं. फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स पाकिस्तान में देयर इज़ एन अलार्मिंग रेट ऑफ women गोइंग थ्रू थायराइड प्रॉब्लम्स. गर्ल्स आवर एज इन आवर जनरेशन बहुत ज़्यादा कोई Oh, होता है. wow. That's good. Thyroid problems होती हैं, and a lot of it is down to chicken. अगर आप if you then go to a doctor या nutritionist, तो आपको one of the first advice they will give you is to not eat the farm fed chicken. So yeah, इसलिए Very don't interesting. get cooking. Let's just get dieting. beefing. Let's get beefing. Or if you're Hindu, then let's get like not That's- beefing that and was- let's Veg. get Let's get Saved. Veg. Saved the day by Sabziyan. Khaqan. yeah For all मतलब the वो है कि Indian हर fans, किसी हर किसी Hindu को नहीं fans. you have a lot of Indian audience and Of बड़े course. ज़्यादा Hindus भी हैं. Yes. So don't eat beef, eat Strangely enough, vegetables. I will let me explain something which actually blew my mind. Last month का मैं अपना data निकाल रहा था Instagram का. I hit 50% Indians and 50% Pakistanis last month. Hmm. Isn't that freaking phenomenal? Like I don't understand pretty cool. which reel went out there. Yeah, Actually, last month का पहले मैंने निकाला, that was the statistic. Then I pulled the last 3 months yeah, and it was similar. yeah. And I think खाकू तो Same है. ड्रामा इंडस्ट्री में है. तू बता के ड्रामास का क्या सीन है? Because you guys have probably 80% Indian fans or something, right? मैं तो बड़ा नया हूँ ड्रामा इंडस्ट्री में बट ये बात मुझे पता है कि पाकिस्तान की आफ्टर अ सर्टेन नंबर पाकिस्तान ऑडियंसेस रन आउट ऑन यूट्यूब इवन लाइक अगर आई थिंक 7-8 मिलियन के बाद देयर इज नो पाकिस्तानी ऑडियंस लेफ्ट फॉर यू टू टैप बिकॉज पाकिस्तान की एक लिमिटेड ऑडियंस है यूट्यूब पे क्योंकि Do you guys have the numbers for that? No, I don't have. Like, I don't. I'm sure the The channels. Can do. somebody pull the numbers? Yeah, How can- many Pakistani YouTubers, not YouTubers, users. how many users of YouTube are there present in Yeah, Pakistan? और Like, give us a number. और ड्रामों के व्यूज आ रहे हैं 50 मिलियन 40 मिलियन हाँ, an exactly. episode. That can be हाँ, Pakistan. हाँ, that's not just Indians. That's Bangladeshis, that Nepalis, that's Sri Lankan And also people. overseas Pakistanis. Overseas Pakistanis, overseas Indians, Nepalese people, Sri Overseas Lankan people Pakistanis, by the way, I do think I have a number for that. There are 1 crore overseas Pakistanis in the world. in the world. So that's 1 10 crore. million That's people nothing, no. that 100% That's a have big YouTube number access. जब आपकी हाँ. अपनी क्योंकि कॉम यार टोटल देखो ना, 20 करोड़ है. 10 million. Yeah. 10 million. 10 million कुछ नहीं, 10 10 million is a huge million number. It's huge. on YouTube. अच्छा, That's अच्छा, huge. okay. पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन हाँ, नहीं, अगर मैं in 20 general करोड़ है सोच तो रहा था. 2.7 billion active users. नहीं, What, billion नहीं हो सकता. Pakistanis or like in general? Pakistanis? नहीं ये दुनिया में है ना. YouTube के active इतने हैं. Pakistanis, not just Specifically all over the world. So Pakistanis. 2.7 2 billion बिलियन पे तो लोग पाकिस्तान से है भी नहीं. Chat GPT खोलो कोई. यही तो मसला है. नहीं 71 million active, I Yeah, guess internet internet users users होंगे होंगे, ये. internet users. But anyways, point being कि अच्छे खासे लोग हैं, but you are right yeah. कि drama averages 40-50 million views, like the good ones. Yeah. And- I mean, not what good है क्या ये तो हमें नहीं पता जो people जो लोगों को पसंद आता है. हाँ, यानी कि 40-50 मिलियन व्यू आते हैं ड्रामों पे. इसके per अंदर का episode. क्रिटिक किस तरह जाएगा? गुड जो है वो सब्जेक्टिव है, लोगों को जो पसंद हाँ, आता है. मतलब यार वो Good, एक bad bad नहीं नहीं, है जब वो. आप एक पॉइंट पे ड्रामों में पहुंच Squid जाते हैं ना Game- आपको करना पड़ता है नहीं ना मनी sport. हाइस्ट और स्क्विड गेम फिर आप लोगों के करियर्स भी कंट्रोल कर हाँ, सकते जब हो. इतना कंट्रोल आपके yeah. हाथ में हाँ, आता जब है इतना और आपके जब आप control लोगों आ- को साइडलाइन पर यही तो मसला है इन सीनियर एक्टर्स बड़े का. हो जाते Once हैं. they climb मैं a तो couple नहीं of हूँ projects senior and भाई. When they did you have the last Londa talk? 4 months ago? 4 months ago. 4 months ago, he was so humble. Now he's destroying careers. ये कितने लोगों के करियर freaking ब्लॉक crazy. किया ये तो आपने? इनसाइड जोक एक लोग सीरियसली लेंगे भाई. ये एक जोक है कि किसी को लगता है कि खकान शाहनवाज इज सच अ बिग स्टार कि ही कैन डिस्ट्रॉय करियर्स. I swear everyone will comment हमें लगता है. और जिस तरह हो, जिस तरह आते हो सामने यही लगेगा. तो बस तक Oof, पार. bro. बट मेरी बात दरमियान में रह गई कि स्क्विड गेम या मनी हाइस्ट जैसे शोज Yeah. जो कि मैसेज में बहुत पॉपुलर है, they're not good shows. Money Heist is not a good show. Money Heist is a good show. नहीं, it's not a good show. Money Heist is a People good who show. watch television. Again, I think subjective. there's a lot of I people think who will disagree. subjective. For I'm example, sure- see again, like good Do you good की watch a definition change होती Did है. you watch Money Heist for entertainment purposes, or did you watch it because Yeah. of story or cinematography? no, I liked cinematography. I like story. How did you watch it?
Like I Laptop watched पे. it, I watched it जब मैं Laptop बहुत पे. वेला था और मैं बस हुक हो गया क्योंकि वो सारा हुक के ऊपर ही शो चल रहा है. अच्छा हुआ ना फिर A देख good show, उनका मकसद ही ये a था. good show is a show that's a slow burn, and it has it has elements of everything. So there's good direction, there's good cinematography, there's good acting, there's good storyline. हर चीज अच्छी होगी तो वो है when खाकान are you जिसकी तू doing a बात good- कर रहा है ना उसको critically acclaimed कहते हैं. हाँ, मेरी बात तो सुन. वही जो good होता है ना. critically तो मैंने ये कहा था acclaimed good की shows होते definition हैं ना, क्या मेरी है? बात सुन. Like Critically college gate. acclaimed films, critically acclaimed shows, number one, they're in a completely different league Hmm. altogether. Entertainment के लिए अक्सर चीजें बना करती हैं, ठीक है? हाँ. वो इस तरह की चीजें होती होती हैं बनती जिसके है अंदर hype entertainment होती के लिए. है, सही है? अब चक्कर ये है कि critically acclaimed जो चीजें हैं ना, अगर वो मैं जाके कहूंगा ना अपनी आयशा को कहूंगा कि यार let's watch this movie because this just won an Oscar, Hmm. I would love it, absolutely love it, but I know for a fact that Aisha would be like, why are you torturing me? Did Same, it true, happen with true, Oppenheimer? same. I would never Oppenheimer watch को- things Yes, ऐसे. it Oppenheimer did पे हुआ happen ना with ये? Oppenheimer. I still haven't मैंने seen नहीं देखी. Oppenheimer. Aisha went with her brother to see it, saw and Barbie. apparently Aisha slept through the mid or something. I don't know. नहीं ये अब आपके पास यूनिक पीस है ब्रो. ये गलत है. सही है? ये गलत है. नहीं, ये तो गलत बात कुछ है. लोग होते हैं नहीं, उनको मैं बता रहा हूँ मजा ना, आता. because यार उसका इंटरेस्ट लेवल नहीं मैच हो रहा था ना. वो हाँ. कहती कि यार मुझे बारबी देखनी है. बात यार बट खत्म. मेरी अच्छा Know इसमें what I mean? अब इस पे एक बात सुनो. That's पता है बेबीज डे stereotypical. आउट मूवी हाँ. सबने देखी होगी. सारे देसी लोगों ने बेबीज डे आउट देखी हुई है. उसको डब में भी देखा है. Multiple और- languages और- में देखी हुई है. Exactly. हाँ. So Baby's Day Out is it's a phenomenon. It should be studied. क्योंकि Baby's Day Out is a flop film. It tanked in the West. They dub it for Indian, Nepalese, Bangladeshi, Pakistani Bro, Jackie Chan audiences movies. and Pakistani audiences. Bro, that movie makes its money back over Yeah. like 10, 20 times. क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो हाँ हाँ तो यहाँ के लोग जो हैं वो बस उन्हें बहुत And पसंद then they आई. made Hey Baby. हाँ, it clicked with it Yo, clicked- Hey Baby Indian? was nice. Hey Baby was यार मेरा amazing. आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने दो. It हाँ, clicked with sorry. audiences. But is मतलब बड़े सबने बेबीज डे आउट देखी हम चाह. But can we call it a good film? We can't. It's a bad film. Bro, it's a very good film. No, I don't know bad तू film. क्या I feel like horrendous again. film. हाँ, Horrendous like it's a not good film is critically something entertained acclaimed by. again. Again bad. Critically film. speaking, it तो may यही not be तो यही good. तो बात है ना ब्रो. लेकिन क्या it चीज अच्छी है? Baby's Day Out की बात हो रही हाँ, है. ये मतलब बच्चा बहुत ऊपर aggressive तुम नहीं कह रहे हो कि होता, बहुत होता फिट है. मुझे लगी थी अच्छी यार, इसलिए हाँ, मुझे क्योंकि याद है हम आज बेबीज तक. थे ना यार, जब हम time देखते pass थे बहुत तो अच्छा हमें है. उसका डे अच्छा, आउट one film that was entertaining and critically acclaimed. Actually, a couple of them. Lion King, Yeah. full of entertainment, Yeah. अच्छा, I amazing didn't like Lion direction. King by the way. The new You one. can call it a good film. लाना तो yeah. तेरी शक्ल मैं पे जब साले. बच्चा कह था रहा है, ना, I didn't like this- Lion this King. stuff was nice, but when I was watching, I was like, वही बात थी आयशा वाली. मेरा इंटरेस्ट नहीं था. Like, I तेरा didn't like interest it. I was नहीं like, okay, ठीक है. Lion I King just में तेरा watched it interest just नहीं so था. like when someone's talking about it, I'm like, yeah, मैंने देखी है. Bro, Lion King पुरानी was a roller बचपन coaster. वाली लायन किंग यार. नहीं, ये जो नई अभी वाली आई है, रीमेक मेरे से था. नहीं अच्छा. देखी ये नहीं ये वाली यार, नहीं मैं भाई, Lion वो King तो- वाली की तो बात अच्छी कर रहा हूँ थी. यार. लाइव एक्शन हाँ. की बात कर रहा हूँ. नहीं, Live live action action नहीं तो अच्छी यार थी. adaptation है ना. मैं हाँ, तो हाँ, but original cartoon movie की वाली बात तो कर रहा हूँ. आपको तो- पसंद ही हाँ, नहीं आ यार, सकती वो लाइव एक्शन जब classic. आपने बचपन में एक And चीज then देखी हो. Home Alone, Home Alone, masterpiece. True. Okay, modern times की एक बात करते हैं. ठीक है, मैं एक हाँ. मूवी बताता हूँ. Entertaining मूवी होगी, but I would want you to call it a good film. ठीक है. Okay. How about बॉलीवुड में देख लेते हैं. बॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसका नाम है Jawan. अभी वो तो नहीं, उसका जवान देखी नहीं. नहीं ना सारों ने. जवान नहीं, पठान. पठान. Oh, Pathan was horrible. नहीं, but it अच्छा मैं एक बात बताऊं. or ask Horrible. Indian audiences. It was entertaining. That's why No, they've I all would like to consumed agree it. to that too. Like I love Shah Rukh. हाँ, that's the thing. Sadeed came to me and Sadeed said, "Bro, you Bro, have to see Pathan, Pathan. because like It's he the came shit." back after so long. You know, I there's a lot of watched it. factors. यार, बस I वही बात watched है ना. Pathan. Good film or bad film? No, bad film. वो Why is इतनी the लेवल bad की film? बोंगियां थी because यार मेरी Because बात it सुन. sucks. No, मेरी because बात you can सुनो, point एक out so second. many things. Popularity नहीं. cannot define His success. acting, एक second. editing. तो रुको. एक second. I saw Jawan. Jawan was good to me. Okay. Jawan was also about like वो उठा के फेंकना और ये वो सारा उसके अंदर हम्म. हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्टोरी लाइन जो है it stitches together. मेरा argument पठान है. के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो बात है पाकिस्तान पठान के अंदर बहुत बेसिक प्रॉब्लम. हाँ, Bro, ये ये पठान तो- खास तौर पे ये Bro, Movie की बहुत बात हो बड़े रही है level यहाँ पे पे, बोल रहे हैं. ladies and हम gentlemen. मूवी की बात कर रहे ये हैं. बातें मूवी की हो रही है. अबे वो खुद पठान है, वो बोल सकता है. हाँ. हाँ, true. हाँ. यार ये गलत है वैसे. और वो अपनी बात कर रहा था, ये वो hypocrisy रेसिस्ट है. नहीं हो रहा था यार. अच्छा, bro- बट मेरा आर्गुमेंट हाँ. रह गया है हाँ. कि आप कह रहे हैं पठान इज अ बैड फिल्म हाँ, पठान is a bad film. बेस्ड ऑन व्हाट.
based on my understanding of films. Exactly. Fast and the I Furious wanna add movies. something to this. Fast and the इतनी Furious was good till fifth. इतने पैसे good. कमाती 5 है. तक अच्छी थी. हर मूवी शिट होती But I है. want to add नहीं, something हर to movie this. shit थी bro. नहीं नहीं 5 तक Like, अच्छी you थी. guys, we're all people that create content or make something creative or do something. I feel like जब आप इस फील्ड में आते Sneaked हैं ना, himself in. तूने कभी शुरू किया Sneaked बे? himself क्या? in. Sneaked himself तूने in. कब शुरू किया बे? bro जनवरी में आना जरा सिनेमा बताता हूँ. Damn. ये फिल्म बना क्या रहा है, बोला था he's a मैंने पिछली producer. पॉडकास्ट में मुझे जब तो मैं पता आया है, था? मैं तो पहले दिन से देख रहा हूँ इसकी चीज़. हाँ, ये अभी ये content एक बहुत फनी creator. कहानी हम जैन के बाद में बताएंगे. हाँ. But also Sadid I also feel like became a when you're content बल्कि बाद में creative- भी नहीं बताएंगे. As an actor, I've learned you sorry. should never talk about True. what could have been, you know. True. ये मैंने You सीखा भी recently एक बड़ी famous TikToker से मैंने ये Or journey what you सीखी. what could have been for other people. मैंने But हाँ नहीं. but मेरी point रह गया. What I mean to say is कि we analyze things more technically. हम चीजें हर चीज उठा के ना उसका literally उसको set कर देते हैं. We rip it apart. स्टोरी हो, सिनेमेटोग्राफी हो, कुछ भी हो, और उसको फाड़ के हम उसको बेसिकली सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं. भाईजान ये फिल्म की बात हो रही है. What I mean to say, हाँ अभी मैरिज content अच्छा creation. नहीं तो फिर तो what I mean to say is कि like हम बहुत एनालिटिकल हैं. अवाम की तरफ से देखो ब्रो, एक बंदा जा रहा है इंडिया में 200-300 की टिकट दे रहा है, अमेरिका में जा रहा है $10 की टिकट दे रहा है, उनको entertainment हार्ड चाहिए. फैन Yeah. चल रही है. ऐवी तो पैसा नहीं वसूल. पठान ने 1000 करोड़ बनाया था ना, नहीं जवान यार ने ये अब 2000 गलत है, बनाने ये लगी है. एनालिसिस गलत है. मैं मौला disagree जट ने 100 करोड़ भी बनाई है ना हमारी ने. यार मौला जट was good. मौला जट was good, right? But a lot of people didn't like it as well. गलत है Too much भाई. bloodshed, ये वो सब कुछ. ओ भाई Opinions है ना. ओ नहीं ब्रो, ये क्या बात हुई कि हम एनालिटिकल हैं लोग नहीं, और लोग भी बहुत एनालिटिकल हैं. The normal That- person, bro, the dramas that you're in, for instance. I'm gonna go specifically to you. The dramas you're in. Why do लोग those डिफरेंट dramas run? चीजों को एनालाइज करते हाँ. हैं. कंटेंट जिस तरह consume Analytical किया जा रहा है, इंसान उस होता है. को हिट कर रहा है ना. नहीं ब्रो, पहले मुझे लगता था, पहले मुझे भी लगता था कि ना लोग जो है ना वो सही कंटेंट वो ना ब्रेनलेसली कंटेंट देखते हैं. ऐसा नहीं है. फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले को टिक ऑफ करते हो ना, देन पीपल वॉच इट. शाहरुख खान, अ लॉट ऑफ शाहरुख खान फिल्म्स फ्लॉप्ड अभी 2018-19 तक 17 तक. आप बेचारे ने critically acclaimed ट्राई की, उसने हाँ. ट्राई किया कि कहीं कोई ना कोई अवार्ड मिल जाए. Bro, Swades was a flop. Swades was a flop. अच्छा, I didn't know that. Yeah, but Swades is a great film. It is. So, but लोगों का अपना एक एनालिसिस का क्राइटेरिया होता है. चकते India was a flop? I think चकते तो नहीं था flop. तू माइक में बात कर ले भाई. Sorry. शुक्रिया. शो में बैठे हुए तुम टिश्यू में डाल के बात कर रहे हो यार. पार्ट काट देना. Sorry. Sorry. मैं ADR कर दूंगा. हाँ. ADR पता क्या होता है? नहीं, अच्छा. हम Dubbing. प्रोडक्शन वाले I'll नहीं let you हैं. know. डबिंग पता है उसने But नहीं. 12वां खिलाड़ी का ओपनिंग सीन पूरा डब किया था. किया था? हाँ. अच्छा, पता नहीं चला था फाइनल एपिसोड में. हाँ, याद करो. I don't know. तुमने देखा बारवा खिलाड़ी? मैंने सारे एपिसोड देखे थे bro. सारे I देखे थे? watched 12वां यार I एक had सेकंड, to एक watch सेकंड. There at least there's somebody who watched it. I watched. What's up? हाँ. How did you like it? Be honest. तेरे Yeah, सामने so the 3 first actors 3 बैठे हैं episodes बारवा I was खिलाड़ी के. very into Sorry, it. say it again. The first 3 episodes I was very into it. The हाँ. last 4 episodes मैंने forward करके के देखे हैं, but मैंने हाँ. देखा है. हाँ. It's because के काफी issues थे. कह रहा है मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा. forward करके देखा है. मैंने देखा था. नहीं कि boys But को the thing support is भी तो कि dude, करनी like छह there's a lot episodes of भी नहीं there's a lot देखी of गई. content online that's way better, edited better, the dubbed better, storyline is better. Like I feel like it was just, no offense to you guys, it was just poorly executed. None in my taken, bro. opinion. I think 12वां खिलाड़ी did what it set out to do, and I think it's a great first web series. But for what the did it country. set out to do? And I have another question to this. I Did- think It did set you out guys to get the benefit ball by any rolling. way from Bro, Baarwan? मैं बताता हूँ. Like, did it help you yeah, bro, I practice think- your skill set and everything? I think for Khaqan it definitely jump started his career. Yeah. For me and Also a for lot of Zarar senses. also. Zarar Like, you got also. noticed. मैं you बताता worked हूँ with what a- 12वां खिलाड़ी did for us. Yeah. We got to I think meet 12वां Mahira खिलाड़ी Khan. can't do for somebody as big as Shahveer. I'm not But big. for me and for Zarar, I think 12वां खिलाड़ी gave us the media training Yeah. that we needed. Okay. It gave us the press training that we needed. हम लोगों को बहुत ज़्यादा exposure मिला था. We were put into situations that we could not have imagined to be in those situations, and I'd forever be grateful to the producers and to the director. Plus it put us in a position to get noticed. yeah, आगे That's काम ना मिलता अगर हमने 12वां खिलाड़ी ना किया That's तो dope. 100% ना yeah, मिलता. and I think just being associated with Mahira Khan's name or Adnan Sarwar's name or Yeah. Neena Kashif's name is a great deal for the industry, Yeah. and that is what it did for me, and for that reason I really liked Baarwan Khiladi. That's dope.
That's How- what how industry me- 4 महीने और अभी देख ये देखे आपने industry देखा में no जाके idea. I इंसान- love how media trained Khaqan has ये become media this trained था guy. अभी, full- ये बदल Oh, गया भाई. bro, sir. 3 महीने में लड़का फुल कराची का बॉय हो चुका है. इसको खा गया है कराची. जाके उन्हीं को ही मुंह दिखाना है. नहीं मैं कहा उनसे मेरी इतनी कहाँ मुलाकात होती है. But I haven't met Myra since नहीं, Baarwan Khiladi. it's right. It's a right thing to do, by the way. Yeah. You Yeah. need to be a little. You can't be honest. Like जो तू पहले था ना. I am genuinely honest. ये honest Dishonest hour चल रहा है यहाँ पे. ओए bro. लेकिन नहीं. यार नहीं मेरा वो मतलब नहीं है. by the way. Which Hold one on, of these? one second, Which one of He these had a things? learning experience. Which one of these things second. did Baarwan not do for me? No. So I wasn't specifically talking about Baarwan. Thank you for Talk trying to about throw you me under the bus. specifically. अच्छा. मैं तेरी बात कर रहा You हूँ. improve. पर generally. मैं कहाँ से सियासतदान बन गया अगर ये बातें मैंने झूठ नहीं बोली? एक सेकंड तू मुझे कह रहा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जिसमें चलती सियासत है उसमें तू सियासत नहीं कर सकता. मैं करता हूँ और तुझे मैं करनी करूँगा. पड़ेगी ब्रो. नहीं I will लेकिन bro definitely. इतनी सियासत भी तो अबे नहीं जितना यार, people- यार I बहुत will सियासत है definitely- यार. यार हमारी सियासत छोटी तो सी तुम industry व्लॉगर्स में भी है. मैं वही कह रहा था. मैं वही कह रहा तुम था. और तुम्हारे हमारी ब्लॉगर दोस्तों छोटी में सी कोई industry- सियासत नहीं हाँ. है. हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है व्लॉगिंग की. कोई अब 15 लोग होंगे टोटल हाँ. जो कंटेंट बनाते हाँ. होंगे. क्योंकि बनती नहीं ना YouTube पे. आपस में. सियासत है ना. हाँ. That's what I'm trying to नहीं, say. नहीं, I'm saying I am a politician. I will be very political about what I say on camera. And you have to be, any day. right? No, but I'm saying that I wasn't being political here because मेरी एक ऐसी बात बताओ जो गलत थी, जो मैंने गलत बोली है. तूने कोई बात गलत नहीं बोली. हाँ, वो मेरे लिए वो सब चीज़ तारीफ कर रहा है कि look at you now, look at you Oh, then. हाँ He मैं was कह रहा हूँ like, कि look at you then. एक सेकंड. यही तो कह रहा हूँ. तू यही तो कौन मीडिया था? ट्रेनिंग थी. ये 12वां हम से क्या यही कह था? रहे हैं. क्या? तू क्या था? मैं किंग. तू नहीं. अच्छा. तू इंस्टाग्राम पे क्या करता था? मैं Oh. उस टाइम से तुझे कंपेयर कर रहा हूँ. अब क्या रो- था? वो जो Yeah. वो जो That's what I mimicry meant. या I was a roasting very big चीजें मुंहफट. करता मैं था. हाँ. कुछ भी बोली तू जाता बहुत था. मुंहफट था. अब अभी control तू आ गया. बहुत पॉलिश होके आया वापस. वापस आ Even गया. though he's एकदम made some चिकना mistakes in the full past few heavy. months. Yeah, Rake one of them is मार sitting के- right here doing a podcast. He's still मुंहफट था. He still made some mistakes. You know, when I went to Karachi, the first week I found out a lot of stuff. What? So like he has done a lot of stuff still. What? He's still the same. एक चल होता है ना अस- हमें trait होता है. नहीं हाँ. बताने वाली नहीं है. नहीं इसके अंदर वो तो बहुत ज्यादा है. इसका But like, कीड़ा वो होता है. वो मुंहफट नहीं But, है. you know what? खाकान के अंदर ना कोई कीड़ा है. इसको कोई किसी चुल चीज का ना होती है. हाँ इसको हाँ, चुल होती हाँ. है. इसको होता है कि ना किसी ने मास्क ना पहना हो मैंने फेस पे बोलना उसको है. कहे कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा है उसको कहे बस लगा होता है पीछे कोई कर रहा है तो बस पीछे. अरे अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती. एक ना मुझे लोगों की आदत की बिल्कुल doesn't make sense to me कि हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं. अब ये जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है ना यही चली जानी है बाहर और लोगों ने कहना हम यार खाकान को देखा था वो उसका दोस्त भी कह रहा था बैठा हुआ कि ना कराची में जाके ये ऐसे लोगों के करियर्स खत्म कर रहा है और लोगों को नहीं पता कि तुम शुगर लगा रहे हो. टोन शुगर वाली रखा करो. सॉरी गाइस मैं शुगर नहीं लगा रहा शुगर लगा रहा हूँ. Every podcast and every media thing that I've done with Khaqan, we have to go through this once के guys ये शुगर लगा रहे मेरी हैं. मीडिया ट्रेनिंग नहीं हुई ना मुझे क्या तुझे पता यार. कॉलेज मुझे गेट वाले बताओ उसमें ना. याद है? या ब्रो कॉलेज गेट का जो मीडिया जंकेट था उसमें इतना ज्यादा हो गया था और इतना सीरियस लग रहा था कि मुझे बीच में बोलना पड़ा था कि यार मतलब खाकान ऐसा नहीं है. बाय द वे वो अभी तक रिलीज नहीं हुई चीज शुक्र है अल्लाह का. वो अभी आएगी जिसमें नतालिया वगैरह Do you शुरू हुई. think people take what you say in the wrong way sometimes? Maybe Yeah. there's a problem with your tone. You know Yeah. I feel like that's what it is. If someone Let's has like discuss 1% what's hate, wrong with Khaqan in today's episode. can we phone a friend as well? Hello. नहीं, ये झूठ पता है. यार, एक bro. सेकंड आई नो आई विल पॉइंट दिस आउट. ये फोन अ फ्रेंड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज़ अभी 2 दिन पहले आपने कहा ओ शी इज नॉट माय नहीं फ्रेंड. मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं in general कह रहा हूँ we all have people we can call. एक second, what is this inside joke between He's you guys talking about two? someone specific is very हाँ तो weird. तुम लोग पता है किसकी बात bro, कर रहे हो? मुझे तुम्हें जानना पता है. नहीं यार. यार वो मैं अपनी पैंट सीधी कर रहा था. क्या हुआ? किस ब्रांड के कपड़े? Gorilla हैं? marketing. ये यार ये रोवर शॉप एक ब्रांड है उसका पहना हुआ है मैंने. अच्छी शर्ट है. मोड़ के दिखा एक सेकंड. तुमने भी तो वही तुमने भी पहनी पहली है. भी देख ओए तेरे पीछे क्या डिजाइन है? मैंने भी तेरे पीछे क्या डिजाइन है ब्रो? यार दिखा यार. यार कैसा है? ये good ये यार. कैमरा में देखो ये जरार Bro, ने भी. दिखा. Bro आगे से दिखा मुझे जरा यूं हो गया आगे ये से. Good. ओए होए होए होए.
यार ये इसका ना ये अगर ठीक हो जाए ओए क्या पाकिस्तान यार पाकिस्तान फुल रिप्रेजेंट हो रहा है यार where'd you guys get these? It's pretty dope यार. माल्टा टी-शर्ट दिखा मुझे भी दिखा पीछे से ये वैसे। पाकिस्तान और ये मैंगो वाली है जो तूने पहनी जो है. मैंने पहनी ये मैंगो है ये राबत। पाकिस्तान के फ्रूट्स को जो है ना दिखा signify- कंपेयर करें जरा अपनी दिखा Very जरा nice. से कंपेयर करते हैं. ये good देखो। यार. ओए होए होए। Very nice. ये very ट्राउजर nice. भी वहीं का पहना हुआ है ये देख रहे हो ये जो Bro, आजकल आए हुए हैं इस चैनल में पहली दफा जो है ना ऑनेस्ट आवर में कोई कट होगा. अबे हर रोज कट होता है ये ट्राउजर देख रहे हो जो नीचे से खुले होते हैं ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं और कॉटन के बिल्कुल मतलब समर विंटर कहाँ कुछ से भी है? हो ये कहाँ ये से? भी वहीं से है रोवर Oh, very nice. आई थिंक ज्यादा महंगी भी नहीं थी ज्यादा महंगा नहीं है हाँ। क्योंकि यार देखो जो नॉर्मल आपको ब्रांड से शर्ट मिल रही है ना वो 3,000 रुपए में मिल रही है वो 3 वॉशेस में खत्म हो जाती है हमारी शर्ट 4-5 हजार रुपए की है इतनी है एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग वगैरह ये वो हेवी मोटी उसके बावजूद ये 300 वॉशेस तक चलती है अच्छा तो वाह। कलर फेड नहीं होता शुक्र है मैंने अपनी नहीं पहनी फिर. हाँ, वरना क्यों? पता चल जाता. कि सर 300 आपने ब्लीच कर दी थी ना हाँ हाँ मेरे पे डालो. नहीं तुम्हारे कपड़े पास भी नहीं धोने आते अब मुझे. झूठ ना बोलो अब ये मैं- फिर झूठ तुम्हारे पास कितनी शर्टें हैं रोवर की मेरे पास पूरी कलेक्शन कल हो जाएगी. पूरी कलेक्शन है हाँ, ना हाँ, अरे तो तुम सही. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यार अच्छा रहा लाइक इट्स गुड फिटिंग. है ना एक सेकंड अगर तुम लोग का हो गया हो, तो तो जिसमें खुल के बात कर लो वेलकम बैक टू द रोवर भाई, पॉडकास्ट क्या हो गाइस गया है? इसको कहते हैं प्लग नहीं ऐसे कहते ये तो बहुत ज्यादा हो गया बट हाँ चलो अच्छा मेरी बात moving सुनो on. एक सेकंड नहीं लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट इट तू रोवर पहन के आया है तू भी रोवर पहन के आया है दिस इज योर ब्रांड दिस इज अ न्यू ब्रांड This is a new एक्टर brand. टर्न्ड बिजनेसमैन फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैन हाउ इज द जर्नी गोइंग सो फार यार फिट है जर्नी वी स्टार्टेड लास्ट ईयर अभी सेकंड कलेक्शन हमारी ये समर की थी द नेक्स्ट कलेक्शन कम्स आउट इन अ मंथ जो बहुत विंटर ज्यादा। होगी तीसरी कलेक्शन होगी एंड सो फार सो गुड मैन इट्स लुकिंग जा दे आर रहा है। लुकिंग गुड we It we does have look good. we have like an identity और हमारी similar एक vibe चल रही है और ये मेरे डॉगी का नाम था रोवर that The one dog that passed away? या Yeah. 14 साल मेरे पास था he passed away last year so we No way. started the brand we thought what we should call it and So then this we- is this does have an emotional value yeah to yeah you. the name That's has And an Khaqan emotion. does have a heart, so he is a nice person. So that neglects. heavy that changes joke है everything. Heavy joke? Heavy कुत्ते के joke ऊपर से। है, अच्छा clear joke cut. है. ज़ाहिर है मेरा हाँ, 'cause दिल you're not a nice है person. मेरा दिल है मैं किसी को दे चुका हूँ वो दिल टूटा हुआ आओ अब इस टूटा- पे आते हैं. अब इस Wow. पे आते हैं. हाँ? एक सेकंड अब इस पे आते हैं. मैं दिल मैं बताता हूँ मेरा दिल जो है ना हर उस शख्स के पास है जो Ooh. रोवर खरीदेगा जाकर rover.shop पे जाएगा और खरीदेगा रोवर तेरा काफी दिल है मेरे पास ब्रो फिर तो. चेक कर दिल के अलावा और चीजें भी आ गई है अगर काफी है तो उसने फिर इतना दिल नहीं जो तुझे लग रहा है फिर दिल नहीं गलत बात है bro, गलत बात. बट या मैं पंजाबी में बात नहीं कर सकता वरना तो. क्यों यार, नहीं बात कर सकते? यार ब्रो मुझे यार मेरी बात जो करना. लोग होते हैं अपनी माँ बोली छड़ के ना और नहीं ब्रो मैंने पंजाबी सुनी है हमेशा मैंने बात कभी नहीं की. इट्स वेरी मुश्किल लाइक क्यों? यार वो It's very accent आ मुश्किल, जाता है. like. It's like very मुश्किल। बड़ा मुश्किल है ब्रो. तो खैर हाँ मूविंग ऑन. पर तुम पंजाबी हो ना I think my family is Kashmiri or some shit. I don't know. मैं बाहर पैदा हुआ था ब्रो. तुझे एक्चुअली नहीं पता तेरा बैकग्राउंड क्या है कश्मीरी हैं ये मुझे पता है. तो ये तूने क्यों कहा मैं आई थिंक I feel कश्मीरी और सम शिट लाइक दैट Yeah, because हम discuss कश्मीरी हैं करेंगे. मुझे It doesn't पता है matter. आई थिंक The- कश्मीरी I'm- It's in which like side? everyone here. तू कहाँ से, बाहर इंडिया कौन से, बात करता है पाकिस्तान caste पे? से? क्या? कौन से कश्मीर से इंडियन कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर ओए don't कौन know. सा बाहर ग्रेड 8 में तो तुम एलजीएस में मेरे साथ बैठे हुए थे Yeah, but I was born abroad, bro. I grew up abroad. मैं तो अभी भी कितने- डॉलर कन्वर्टर 13 साल पुरानी बात है मैं तो नहीं इधर. मैं 8वीं में ही आ physically गया इधर हूँ, था mentally मैं बाहर हूँ, bro. What are you talking about? Don't talk to me like this. What are you talking about? Look at this 2009 guy. में हम मिले थे Look at this तब guy, से bro. तो ये यार पाकिस्तान है शबीर 2019 में वापस आया और उसका एक्सेंट लूज हो गया ऐदा हाले तक नहीं हुआ It's because I'm actually from there. ये यहाँ से गया था मैं पैदा भी बाहर हुआ था. ओह तुम्हारे पास पासपोर्ट है यूएस I नहीं have means. It doesn't have a US No, लेकिन I was hold born on. in the UK and then we immigrated to the US. लेकिन So I Siddhi, have when you were born in documents. UK तब law था Shouldn't- कि unless a parent has it, I can't get it. also your So parents there's didn't have like it at two the ways. time Like I can go to the UK, fight a case and get तुम it. लोग स्लिप हुए थे यूके में We went. Slip हुए थे UK में. वो अबे नहीं चले. अंकल आंटी के पास क्यों नहीं था पासपोर्ट वो तब यहाँ गए से थे वहाँ ना। गए हुए थे ना. They अच्छा, didn't वो लोग immigrate visa there for वगैरह पे गए हुए citizenship थे and and stuff. then- वो वहाँ गए थे for work. Then they immigrated to America. very So I interesting have documents in process for America. Like I can go there or I can go to the UK, fight a But case and वैसे get that. in his defense I'll say one thing that up until grade 8 your personality is like developed Yeah, 'cause जो वहाँ जो पे मैं वो- 8वीं में था
वही I think continue हुआ है and like things have been added By on the to way, with that. the accent thing, I don't think it has anything to do with being born over there or being Yeah, born I over think here. it's It's about just- practice. हम Yeah. बात उसके Honestly. कश्मीरी होने या ना होने की कर हाँ रहे थे ट्रू I feel like यार कि भाई, मैं आपको वो पता वो क्या है? प्रॉब्लम कश्मीरी एक bro, सवाल यार, पूछने मैं से कश्मीरी सॉल्व हो हूँ, सकती ख्वाजा है मैं वगैरह बता दूं कश्मीरी ख्वाजा है होते हैं, bro. कश्मीरी है बट कश्मीरी होते हैं कश्मीरी ही हैं बट नहीं बस कश्मीरी है ख्वाजा कश्मीरी but that's होते my हैं dad's side my mom is from like Lahore Bhagwanpura side तो वो लोग I guess पंजाबी ही है ना फिर हाँ तो वो तो mix है so I'm like Same. पंजमीरी ये job. पहली बात जो कह रहा है उसको खुद पंजाबी नहीं आती वो तो हाँ। कंफर्म क्या कहता है हाँ। पंजाबी तो है। मैंने कब कहा है कि bro, मैंने तुझे कभी तू शोधी पंजाबी मारी मुझे सुना पंजाबी ना। आती ये है भी नहीं बोल हाँ, ये मैंने ना कभी तो शोधी ज्यादा मारी तो मैनू पंजाबी आंदी है बब्बर शेर पंजाब दा सबसे ज्यादा इसको आती है फिर इसको आती है फिर मुझे आती है और मैं उर्दू में भी बात कर अबे सकता हूँ आई चल, कैन चल, टॉक इन चल, इंग्लिश चल, उस चल, पुख्तो के हम खबर है कोलचल Yeah. गल कर पंजाबी च bro की गल कर पश्तो इंग्लिश कर। उर्दू पंजाबी ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਂਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ bro ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਲਾਈਕ ਕਟ ਆਂਦੀ साले गाने को पंजाबी कट आना आंदी नहीं नहीं बोल पंजाबी आंदी कट आंदी है शर्म आंदी है ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ का कोई गाना सुना ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੋਚਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ बहुत आला यार सदीद तेरा फेवरेट एनिमल क्या है तेरा फेवरेट एनिमल क्या है cats that's why I have a cat He's a cat person. yeah That's your favorite animal like all time लाइक पेट्स के अलावा भी I've never मतलब thought होते हैं about ना लोगों को कुछ अच्छा तेरा स्नेक्स फेवरेट एनिमल क्या है जंगली बिल्ली फॉक्स Mr. Fox. Mr. Fox. Yo, what's the story behind Mr. Naughty. Fox वैसे बता दे यार पता नहीं ब्रो मुझे असल में नहीं पता याद नहीं। बस तेरे दोस्त तुझे फॉक्स कहते हैं नहीं मिस्टर हाँ। फॉक्स तेरा हम कोई बस है? वैसे ही फॉक्स कहते हैं Fox. मतलब Mr. एक Fox. तुझे डिफरेंट तू चीजों Fox को है। और मैं मिस्टर फॉक्स हूँ तू मिस्टर फॉक्स है तुझे कौन कहता मिस्टर फॉक्स? कोई मुझे मिस्टर फॉक्स नहीं कहता मैं अपने आप को कहता हूँ PlayStation वाले अच्छा तेरा अभी तक तुमने कोई ढूंढा नहीं जो तुम्हें शावीर। फॉक्स कहे. Fox ही कहता है कोई मुझे विक्सन नहीं मिली अभी तक शावीर व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल Dog. अ डॉग but pets के अलावा कोई like animal है like in यार general ये पेट्स हाँ, wolf. तेरा सही था Wolf. वुल्फ Yeah. ओ यार Fox wolf नहीं, actually there's a reason behind अच्छा, why I मेरा like पता है क्या है? wolves. why wolf orca whale क्या Orca whale. orca whale wow those animals Killer are- whales जिसको बोलते हैं. yeah killer हाँ, orcas those are orcas. the black and white Uff, one bro वो क्या वो पता है वो क्या They're वो very इतने intelligent क्रेजी by हैं the way. ब्रो वो ना कई दफा सिर्फ स्पोर्ट के लिए शिकार करते हैं और करके फेंक देते हैं खाते नहीं हैं। Yeah. this tells a lot about हाँ, you या वो अच्छा, they सीन- play with live animals too. हाँ वो पकड़ के ना पेंगुइन को पकड़ के या सील को पकड़ के उसके समुद्र में साथ फेंकेंगे वॉलीबॉल खेलते हैं. वॉलीबॉल खेलेंगे और उछालेंगे एंड लाइक हंट दे हंट इन पैक्स और एक और क्रेजी चीज करते हैं वो अगर जानवर जो है वो बर्फ के ऊपर है ना तो ब्रो वो नीचे बर्फ के तेज स्विम करके ना बर्फ को तोड़ देते हैं खाली Other यही videos. नहीं they use There's proper videos. physics laws to hunt their prey. अगर कोई बर्फ के ऊपर penguin है ना जिस तरह इसने कहा तो they would swim so fast close to the बर्फ that the बर्फ would go like this and the prey would Penguin fall into गिर the pool and they would eat और it. ब्रो इस तरह के मुद्दे हैं वो दिमाग Think about orcas it. तो इसलिए मुझे orcas बहुत Crazy. पसंद है क्योंकि ब्रो these are very smart creatures of the sea Yeah. like imagine और जो पैक्स वाली चीज है ना कि हंट इन पैक्स समंदर में किस तरह एग्जिस्ट करती है ये चीज दैट्स जस्ट इनसेन क्योंकि समंदर वुल्व्स भी इतना पैक्स बड़ा में होता होते है हैं हाँ वुल्व्स भी पैक्स में That's one of the reasons why I like wolves. Wolves are very smart phenomenal creatures. They Yeah. एक तो उनकी प्रॉपर हायरार्की सिस्टम होती है जिसको वो चाहते हुए भी नहीं तोड़ सकते. Yeah, ठीक जिस है? तरह के वुल्फ क्रू में भी है एक है obviously. but do you need think to have. do you think एक से तू हायरार्की में बिलीव नहीं करता? मैं हायरार्की में करता तो हूँ फिर Hey, है। गॉड इज वन गॉड इज ग्रेट देयर इज ओनली वन मेरी हायरार्की में सिर्फ एक एंटिटी है वो गॉड Okay. no but Nobody hierarchies but Nobody in is man there is God. hierarchy na हाँ like where you work where you're living hierarchy जिधर maybe है। जिस इंस्टीट्यूशन में Without आपको वो institution Hierarchy in an institution order. will fall. या Period. जिस तरह किसी ड्रामा के सेट के ऊपर डायरेक्टर इज सुप्रीम Bro, शादियां इसलिए टूटती हैं because there's no hierarchy. अच्छा तुम्हें लगता है True. शादी में एक हायरार्की होती है There हस्बैंड has to वाइफ be. में no There I has to feel be. like, तो bro, नॉर्मली There has to be- हस्बैंड ऊपर होता है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. हाँ तुम मैं कह रहा हूँ there is an edge always. There's किसका always होता an है? edge किसी some एक sort of का। edge. हस्बैंड तुम का कह है। रहे हो किसी एक का होता है हाँ. could be Wife का भी हो It सकता could be हाँ, it could be सही। either हाँ, or. हाँ, someone मैं has ये नहीं कह रहा control. मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा कि हाँ. किसका होना चाहिए हाँ. किसका नहीं होना किसी चाहिए. एक का edge होता है। That's a different debate altogether. But
actually final call interestingly होती enough, है. a I friend think of mine- relationships में ये up and down होता है. किसी दिन किसी का दिन होता है, किसी दिन किसी I का feel दिन like there's होता है. always someone that's taking just care like of नहीं, just नहीं, like I think आप there's- effort किसी दिन कोई 70 डाल रहा होगा, किसी दिन कोई कोई- 60 डाल रहा होगा, True. उसी तरीके से उसी तू लड़ाइयों का मैनर ना में सोच। आपकी नहीं, लड़ाइयों bro, का bro, नहीं. like, देख, मैं you can effort have आप लड़ाइयों कह रहे हो का ना कि सोच। हायरार्की है, तो किसी दिन एक बंदा ज्यादा willing होगा to take on the mantle. Yeah. एक दिन मैं Cute boy कहूँगा, एक underscore दिन fox. सही है. But ये Zarar, favorite बात है. Zarar इसमें एक और चीज है, like अच्छी ये तो बात है. चलो on off days है, but in general in a relationship there is a set person that is probably in control. You can have your off day, but there will be that one person who will also अच्छा, I end up taking care of it all. or okay. end up making it Control right. my mood. I think Huh? it's Control my mood. अच्छा, I think it's like I think it's like departments. You bitch, feel better. I think it's like क्या? Mood. अच्छा. अच्छा, bitch, I feel think Feel better. अच्छा guys, ठीक होना मैंने है। कहा I mood think दिखा क्या रहा है? bro. oh यार इधर रहने दे। विंडो की तरफ देखना वही शुरू हो गया। तो- मैं तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ साले आगे फील से- बेटर Bro, ये तूने हाँ। वो बात की है, like you know, like you Control message a my friend, you're mood like, ना, यार, हाँ। I have anxiety. हाँ, क्या तो चीज? वो- you know, Yeah, तूने वो बात की है, like someone messages and says I have anxiety. They're like, There's Don't no worry. such होनी thing as चाहिए bro, anxiety. don't worry. नहीं वो कहते हैं feel Don't better. don't हाँ, be feel sad. better, bro. यार Feel क्या हो better. गया? Okay, feel cheer better. up. क्या हो अच्छा गया? नहीं, but I think departments होते हैं कि एक relationship के अंदर, किसी भी relationship के अंदर departments होते हैं. So for example, अगर शादियों की बात ना भी करें, दोस्ती की भी बात करें, so if me and Zarar are traveling, there's departments. हर चीज में departments establish Someone's होंगे handling कि something. अगर खाने का decision लेना है तो I'd always Zarar will take the lead, क्योंकि Zarar जो है उसको पता है ज्यादा खानों का मुझसे. मैं पूछूंगा हाँ भाई तेरा क्या ओपिनियन है इस चीज पे, तू बता. समझ. और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं करूंगा. रिलेशनशिप्स में भी इसी तरह होता है. डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कपल के. कुछ जिस तरह अब पैसों के फैसले हैं, वो अगर हस्बैंड कर रहे हैं या बीवी कर रही है, वो डिसाइडेड होगा. मगर कोई और जगह ऐसी होगी लेट्स से कि रिश्तेदारों के साथ क्या करना है, किधर क्या करना है, वो बीवी ज्यादातर करती है True. देसी घरानों में. True. So I think it's departments, there's no edge lead. And ये unspoken होती Responsibilities हैं. Yeah. basically. ये unspoken भी होती हैं, like ये बस I feel like sometimes it That's just a very comes into interesting place. take. However, that being said, I do feel like some departments, or Mm. in other words, responsibilities are Mm. bigger than the other ones, Ah, that's or a good word. hold more value. Hmm. For example, earning money cannot be equally as important as going to, for example, a rishtadar's house. Yeah. You know what I Yeah. mean? True. So some responsibilities or departments are bigger than other departments, and I feel like that's where the edge, or that's where the The person comes hierarchical above the structure other. comes Yeah, in place. yeah, I feel so. yeah. And I do feel like कि, for example, अगर एक company के अंदर दो CEOs रख दोगे, Hmm. that company is bound for failure, because you cannot have two directions that you can take a company in, Very true. let alone a relationship. Very I true. feel like, and by the way, that does not, I'm not trying to say that a relationship is not like it takes two to tango, 110%. Yeah. मैं खाली एक उस direction की बात कर रहा हूँ या simth की बात कर रहा हूँ. That's it. I know this is a very controversial Okay, topic. Shahveer, take. Shahveer? That's a very controversial topic. I just want to let you know I am not preaching anything. These are And he's- just my opinions. And he's willing to learn. हाँ, I'm willing to obviously. learn. Comments में कोई बात आएगी पढ़ेगा. But ये सीखेगा. होता है, ये like legit होता है. And जरूरी नहीं है कि एक specific gender ही हो, like I feel like 90% of the time it's actually What do you mean the girl- specific gender? Like it's not just like you know how like everyone says the man is earning and stuff like that, Yeah. right? So I feel like Yeah. 90% of the time it's the woman who is इसमें in tricky control. पता है क्या है? हाँ, So if the question then arises is if the woman makes the more money, the wife makes more money, does she then take all of these charges? Because के आपका argument क्या capitalist structures की वजह से इस तरह है कि जो पैसे कमाता है वो फैसले लेता है, या it is more because of just what's in between the legs, as in gender? in between the No, it Legs. cannot be that. Yeah. I don't पैसा- think it's पैसा dictated dictate by करता है. money. No, I don't think it's dictated What by do you just think money. by gender? Dictated just. I think it's a mixture of different things. I don't think money is it. but Leadership dictation- qualities. For example, people who don't have money, they still have hierarchical No, but there's still structures. some money, na? There's still some money. I'm sure, but some people have no money. True. Some, No for one has example, no ex- money. ex- 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 Those ex- people, Money those isn't the people only are- value. Let me put it this way. Let हाँ. me put it this way. For example, आपके जो घर में लोग काम करते हैं, हाँ. लड़की भी काम करती है उस फैमिली में से, हाँ. लड़का भी काम करता है. हाँ. I think I can guarantee कि वहाँ पे एक hierarchy है, बिल्कुल है. exist करती है. But that's a and the sexist- women are in Not charge. just the money. But No, that's but an it is- uneducated sexist अरे sexist hierarchy. sexist. Sorry. मेरी एक बात सुनो, सबसे Sexist मजे hierarchy. एग्जांपल देता वही हूँ. लेकिन different part of sexist किस तरह? Philippines. वो एक different Sexist किस तरह? जब Oh, ये जो समझाओ working sexist class किस है वहाँ का sorry
working class की understanding and तौर तरीके completely different है. हाँ, तो उसको तुम तौर तरीके कह सकते हो, सेक्सिज्म नहीं कह नहीं सकते। नहीं आप कह सकते हो ना because नहीं आपके you उधर can't call it the exposure working different. class गलत term No, use किया। मैं अच्छा are we talking about like people that are working in a house, or are you talking about in general like a couple that's working No, out he's anywhere? talking about underprivileged Underprivileged households. people. No, he's talking about underprivileged people who make less than $100 a month. Yeah, So who is make that less not- than is that $100 a not month in the because working class then? नहीं They're नहीं making but under working minimum working wage. class बहुत बड़ी होती है working class में middle class भी आते हैं upper classes भी आती है anybody who's Okay, working is a ठीक है, working class underprivileged class कर लो, but ठीक है. मैं बताता हूँ इसकी बड़ी मजे का केस स्टडी है Philippines so in the Philippines it's जो mainstream culture वो ये है कि women work so women go abroad make that money send it back home women who are nannies across the world nurses these are Massage these are therapists. Filipino women नहीं सुनो these are क्या कहा Filipino इसने? मसाज थेरेपिस्ट। हाँ तो अब है तो मैं की अरे यार अच्छा आर्गुमेंट के दरमियान में ना खराब किया करो Filipino women make the money in Philippines and they send it back home Yeah. वहाँ के ऊपर वहाँ पे बहुत ज्यादा matriarchal structures exist करते हैं and हाँ. women are much more empowered and women are much they're a more important part of the society than the men the men are in the वो caretaking वाली situation house husbands हैं वहाँ पे जो घर रहते हैं और अपने वहाँ के बच्चों का ख्याल रखते हैं and the women are out there making money and I heard this comedian talk about it बिल बर्र ने बात की थी हाँ या डेव शपेल ने बात की थी कि एक फिलिपिनो बॉक्सर था एल्वारेज या पता नहीं क्या जिसने बेसिकली किसी उधर ना अमेरिका के अंदर LGBTQI को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दी थी then he lost all of his deals so वो कॉमेडियन I think again डेव शपेल या बिल बर्र वो ये कह रहा था कि this is what's happening in the Philippines and they among these emasculated men rises a champion of boxing who's like the epitome of masculinity and has control over his life and उसको अगर आप कहोगे ना कि LGBTQI को recognize करो ये वो so he will not you need to understand the cultural context in his head and the culture where he's coming from so this is a very complex debate I'm not saying कि वो boxer ठीक था या Filipino See, that's my problem with this whole argument is Yeah. that when you, for example, the West saying because you don't really understand the feelings of, or you don't recognize the Certain LGBTQ2S Yeah. plus, therefore you are transphobic. 'Cause it's either this or, Or that. Black and white. या तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे against हो. Yeah. बीच का रास्ता या the power of understanding one another. I feel like that's missing out. For Yeah. example, अभी जो हम लोग ने डिबेट की है हायरार्की वाली, Yeah. सही है. अगर ये चीज कोई लड़का जो कि एक गांव में है जिसका ये स्ट्रक्चर ही उनकी फैमिलीज का ये है वो सुनेगा उसको ये कंप्लीटली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगेगी. लेकिन अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड से ये चीज सुनेगा या यहाँ पे जो बहुत वेस्टर्न इंक्लाइंड कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ वेस्टर्न वो सुनेंगे हो सकता है उनको ये चीजें एलियन लगें या हो सकता है उनको ये सोच बैकवर्ड्स लगे. Question though. But that does not mean that I'm backwards as a whole. It's just that I may have opinion that differs from I you have on something certain things. to add and that is कि तुमने बोला कि वेस्टर्न बंदे को ये बात नहीं समझ आएगी और हमारे यहाँ के एक कंजर्वेटिव from like a village person would get it. You're saying that. I'm saying they won't get it. The hierarchy Western, thing. नहीं the Western person will get it क्योंकि West के अंदर फिर थोड़ा सा room for debate और argument है. The person here West में भी far left circles में नहीं है. West के अंदर एक majority center में exist करती है उसमें है. पाकिस्तान के अंदर people will not understand what you just said and I'll tell you why because you said and I quote कि there needs to be a beach का रास्ता and understanding. You need to understand that in Pakistan, the stance of majority of the people are shut them down, kill them. Yeah. That is what their stance is. So no, the Pakistani See, what the conservative debate will I also was not understand. जो debate जो point मैं मार रहा था ना वो ये है कि hierarchical structures exist for good or worse they exist. That's the point. People जो कि conservative हैं पाकिस्तान की 99% population सिवाय 1% को छोड़ के जो top पे रूलिंग एलीट को छोड़ के ठीक है 99% लोग इस चीज को बिलीव करते हैं. नहीं not ruling elite. Okay. Ruling elite. Not नहीं. just ruling One elite. top 1% नहीं. It's just it is less than 1%, but it is just
the educated westernized kids, and those kids are everywhere. Those kids are in any education नहीं लेकिन मैं institute. far Very middle majority class की बात families कर I've रहा हूँ. also seen that support LGBTQI. Anyone with internet. Very lower middle class, very even like people coming from very small towns and not having any money, or also like Yeah, those are one-off cases, bro. You cannot. वही है ruling वो class masses तो है. bro ruling class तो वो है जो like property moguls and all of these people, and they're just like us. हम लोग भी देखो ना, हम 4 लोग हैं, हम चारों के अंदर कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि अच्छा सही है वी सपोर्टेड, कितने लोग होंगे जो कहेंगे नहीं वी वांट वी हेट इट, कोई भी नहीं. बहुत लोग हैं. So खैर anyways, again difference of opinion भी है इस चीज के देखो अंदर. अब At the end of the हम day, चारों के bottom पास line different ये है. opinions है, होता है. और सबका ओपिनियन किसी ने ओपिनियन डेफिनेटिव But- दिया ही but- नहीं but है. ये भी also- नोटिस करो. हाँ. If a smart person's watching, they would notice that none of us either supported or spoke against it. Boys, men, Boy. what do men want? A By hug. the way, that's the name of the topic. That's not the question. उसके First लिए- मैंने thing, जवाब इसका दे बड़ा दिया. Hold सिंपल on. जवाब था, मैं एक वर्ड बोलने लगा था. क्या? friendship. पैसा. हाँ. पैसा. हम सेम लेवल पे थे, वो मैं समझ गया. मैंने यार, कहा आप लोगों था- को मैंने मेरा तो joke कहा था, नहीं a समझ hug. आया यार. You guys didn't get the joke. क्या जोक था दोबारा जो बोलना? क्या था? Ask again. जो क्या हम फिर हंसेंगे? What do men want? पैसा. अगर पैसा चाहिए तो सुबह ठीक 9:30 बजे 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना बड़ी मुश्किल से. मैंने तेरे लिए एक बस बहुत arrange की. कम लोगों के लिए एक मैं पास अरेंज कर सकता था. उन बहुत कम लोगों में मैंने एक तेरा नाम रखा. तो अगर जिंदगी में असल में कुछ करना चाहता है कल 9:30 मिस मत करना वरना बहुत पछताएगा. ठीक है. कौन है ये एक वीडियो है बस वायरल मीम वीडियो है. मैंने और ज़रार ने पूरी इतनी देखी लंबी थी. वीडियो याद कैसे Damn, होगी? bro. Bro, That हमें- means you guys must have seen it like 15 times. तुम No, लोगों को ये और हमने कुछ नहीं है प्रैक्टिस करने भी को. किया मतलब नहीं, practice नहीं हमने हम कभी ये बहुत बस- कोऑर्डिनेटेड लग रहा था ब्रो. है ना? बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड. ओए यार ये मुझे लग अगर रहा है ये एक phone बार पे वीडियो call देखो. करके एक दूसरे को ये इस वो तरह की इसको बातें एक्टिंग करते आती रहते हैं, है ना? ये पता है बस. कॉल अच्छा करके है, तो ये हम skill set करते अच्छा है. हैं सुबह क्या चाहिए? 9:30 बजे. लेकिन ये वीडियो भेजी यार अगर मिलती है. I want to see this now. मिलती क्या मुझे पता. मैंने नहीं क्यों सेव की चाहिए लिया. तुझे वीडियो? It's I not want to funny. see it now. ओए इट्स वेरी No, I want to see it now. खाली तुम लोग ने एक चीज याद की हुई है, वो लग रही है फनी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो सही हमारे में बोलते हुए funny है. बहुत कम फनी है. अच्छा, असल में बहुत बहुत कम Oh. फनी है ब्रो. बहुत कम लोगों को ये फनी लगती है. उन बहुत कम लोगों में एक तेरा नाम है. वो बॉय इस तरह बोलता है ब्रो. कमाल वीडियो. लव दैट गाय. Yeah, there's a guy there, is he a Pakistani guy? नो नो इंडियन. Wow. No, पाकिस्तानी I'm gonna किस see बॉय this. की बात कर रहे यार हैं? तुम यार गॉसिप करते हैं किसी. बताओ एक boy है, आजकल एक किन boy है, यूट्यूबर्स मुझे की लड़ाई चल रही बड़ा है. पसंद है. किससे Yes, तुझे? okay. हैवी, यानी कि वो जो बॉय है ना, वो पुनीत? यार नहीं, मुझे Lord उसका पुनीत नाम नहीं नहीं याद आ रहा है. His Lord comedy is पुनीत। just like amazing. ये वो है, वो shirtless है, एक हाँ। shirtless videos बनाता है यहाँ तक बस उसकी, सही है. और वो टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहा वकार होता है. ज़का. यार वकार से क्या नहीं यार. आप अपना स्टार साइन भेजें और मैं पिक्चर भेजें मुझे. स्नैपचैट की बात नहीं कर रहा बॉयज. वो शर्ट के बगैर वीडियो Good, बना. good. यार शर्ट के बगैर बनाता है, बट ही इज लाइक यूजुअली वेयरिंग हेडफोन्स. ही इज अ लिटिल सांवला. एंड फॉर एग्जांपल उसको क्वेश्चंस आते हैं लिखे हुए इंस्टाग्राम पे, नहीं होते आस्क मी अ क्वेश्चन, No तो वो उसके clue. आंसर्स What's करता है. Samla? सांवला इज लाइक सांवला यार. सांवली सलोनी. कर एनीवेज. एनीवे आगे बढ़ते हैं. Tan. मुझे एक बात वो बताओ. बहुत फनी लगता है मुझे. मुझे- boy, वो कौन है वो ये? उसका ना लोगों के उसका सवालों बोलने के का जवाब तरीका दे रहा होता है हाँ, अपने like for phone example, में. TikToker. somebody asked him कि मुझे आपको पता। जब एंजाइटी होती है तो आप क्या करते हो? तो he reads ना, आपको जब एंजाइटी होती है तो आप, मैं तो सो जाता हूँ. ओ ये जो रील्स बनाता है boy, Reels जो questions बनाता है. वो पाकिस्तानी नहीं है. यार पाकिस्तानी है यार क्या. हाँ पाकिस्तानी है यार. आता यू कहता मैं तो सो जाता मैं तो तब से सोच रहा हूँ इंडियन बॉय कौन है, इसलिए तो पुनीत हाँ, बोल रहा था मैं. इंडियन नहीं, इंडियन है पाकिस्तानी. Yeah! He's यार really funny. बिग Big बॉस Boss में आया, he got Big Boss kicked out में bro आया. because of this stuff. ब्रो. तुम लोग बिग बॉस देख रहे हो? नहीं नहीं लेकिन नहीं वो ये चीज़ है. पुनीत आया था एक Bro दिन हम के सिर्फ लिए. तमाशा घर देखते हैं नहीं bro. मैं भी तमाशा देखता तुम. मैंने कुछ एपिसोड अभी रिसेंट सीजन में देखे I हैं, saw bro. the first 2 I was episodes. like wow, okay. How is it? It's entertaining. Time pass बहुत अच्छा. ARY should come to me and they should just give me the idea. Let me do it. I will generate at least 3-4 crore रुपए off of this. Bro I I'm know it sure for a they're fact. already generating 3-4 crore. नहीं कर रहे हैं. bro वो बना रहे होंगे. बात तो- नहीं समझ आती कि नहीं Indian मैं Big कुछ Boss- नहीं बोल रहा. इंडियन बिग बॉस का कैश प्राइस क्या होता है? अरबों रुपए होता है. नहीं, Bro कम से कम मेरे 50 ख्याल लाख. से 50 लाख सलमान खान Indian उसको rupees. होस्ट करता है. अबे, अगर 25 लाख देंगे ना, उसके मुंह पे लोग मारेंगे season, वापस. right? क्या अबे होगा? Salman takes यार, 100 ओ crore per यार. season. हाँ probably. हाँ. अच्छा चलो मैंने गूगल किया था. मैं बता दूं कितना हाँ, प्राइस. बताओ. मैंने गूगल किया था कि जब मैं तमाशा का प्राइस मनी पता मैंने कहा बिग बॉस देखें कितना. हम्म. 50 लाख इंडियन रुपीस. अगेन करोड़ रुपए पाकिस्तान. 1.5 crore. 1.5 करोड़ पाकिस्तानी.
नहीं यार 50 लाख नहीं हो सकता ब्रो, यार कोई नहीं हो Google सकता, it, मैं yeah, मानने yeah. को तैयार नहीं हूँ ये चीज। तो शो में होने से Prime. और जीतने से पैसे के अलावा फेम बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो हाँ। थोड़ा सा you बहुत can't put a बहुत number ज्यादा on it. शावीर जाफरी लेवल फेम मिलता है? नहीं वही यार तो है तुम्हें क्यों ज्यादा, लग रहा है मेरे उसके पास अलावा। बहुत ज्यादा फेम है? आपके पास बहुत फेम माशाल्लाह है। माशाल्लाह नो माशाल्लाह ब्रो, आप सड़क पे अभी- निकलते हैं 10 लोग हमने आपको गालियां हमने निकालते हैं। अपनी आंखों से Exactly, ये देखा है fame अपनी। नहीं तो होता यही है। तो यही फेम तो होता है, bro, लोगों when को you पता have है। haters you made it in life. नहीं लोगों को पता तो है कि एनु कटनिया ने गाला। हमारा तो लोगों को पता तो नहीं है ना होता। लोगों को देख bro. नहीं शावीर के पास पता है कितना फेम है? मैं अंदाजा आपको बता के लगा सकता हूँ कि शावीर के साथ एक दफा मैं मॉल गया हूँ, एक दफा, और शावीर ने ऐसे टोपी पहन के इधर तक मास्क पहन के शावीर साहब आए थे और हुडी पहनी हुई है ऊपर, और फिर भी 3 लोगों ने आके सेल्फियां ली थी, और वो भी साइड पे जाके बाथरूम के साथ ली थी। ये लेवल ऑफ फेम है, लोग इसकी बॉडी पहचान रहे हैं भाई। शक्ल तो नहीं सी नजर आ रही, इसके प्यूपल्स को पहचान रहे हैं ब्रो। प्यूबिक हेयर को भी पहचान रहे हैं। यही है, तो ये वीडियोस मिल गए। ये शावीर है, ये शावीर है। ये इसके घर में मैंने इसके पॉडकास्ट में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही सीन है भाई, ये है लेवल बहुत ऑफ ज्यादा फेम, मुझे लड़के। ये चाहिए। बहुत अगर बुरी ये सोच लेवल है। ऑफ फेम मिलता हो यार ये तमाशा घर से, ड्रामा से ज्यादा आई मिलता थिंक है। ऑल ऑफ अस विल डू। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि you can't put a number on अच्छा the एक amount सेकंड, of fame that शावीर, you आई हैव अ get. क्वेश्चन, वुड यू डू बिग Yeah. बॉस? No. क्यों? यार I just don't like the concept. देखा, ये लेवल ऑफ फेम Would चाहिए। you वुड यू डू बिग बॉस? would you नो। do Big Brother? Would you do Big Brother? No, I जो wouldn't do. बाहर I वाला है? wouldn't lock myself in a house. I Would would you do host ये it? it. सारे Big एक ही Brother? चीज I'd है। host it. I'd host it. क्या बोला You'd तूने? host it. सलमान, I'd अच्छा host it. ये लेवल ऑफ फेम चाहिए कि मुकाबला सलमान खान के साथ। नहीं यार मुकाबला नहीं है, but like I'd rather host it. सनी मुकाबला लियोनी हो गया कौन है? वो बच्चा उसने हमारा। बिग बॉस किया हुआ है। सिर्फ सलमान खान तो नहीं होस्ट करता। सिर्फ हाँ? सलमान खान ही सिर्फ होस्ट सलमान करता है। खान होस्ट करता है bro। सर, हाँ, वो पाकिस्तानी bro, वाला तो सलमान सलमान खान ही खान- अबे होगा हम तो। बिग बॉस By की the way, बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सलमान अंदर खान कौन host है? Who's the host वो over here? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी Right. साहब। और सलमान खान ने बाय द वे बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप करवा दी है ब्रो। अब like it's not on like a channel I think anymore. It's like there's an OTT platform proper. तो That's and it's like daily यार episodes and then बिग there's clips बॉस and के shorts. ब्रो, बिग बॉस के जो जो कंटेस्टेंट्स हैं ना, हाँ। मैंने उनके आफ्टर मैथ्स देखे हुए हैं। Yeah. जो लोग वहां से सक्सेसफुल निकलते हैं ना, यूजुअली नॉट ओनली दैट कि आप जीत के निकलो, नहीं Yeah. आप हार के भी निकलो, लेकिन Yeah. आपको Yeah, लोग अगर followers पसंद कर लेना, हाँ हाँ। ब्रो वो जो एक लड़का नहीं है वो जो अभी मरा था, क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ सिद्धार्थ। bro. What a guy man. तूने उसकी फैन फॉलोइंग देखी है? Yeah, Shanaz Gill वाला boy जो था ना। Yeah. Yeah, Bro, it's insane, it's yo, insane. I like मैंने बचपन में ना Big Boss like when I was like a teenager बहुत देखा है, ठीक है? And तो everyone, even if you're not successful, if you're like a bad person, if you're a dick, you're not successful. It's simple as that. But even if आप end तक नहीं पहुंचते ना, everyone's successful today. And Look you at have a everyone. good personality. हाँ हाँ. Yeah. क्योंकि होता ये, what I read about this is like when people are like out of the show and everything, PR agencies and people लोग पकड़ लेते हैं bro, foreign training शुरू हो जाती है. Hmm. And the people that actually win in the end ना, Yeah. they actually have lesser fame. And then the people that have worked their way वो 3 महीने में or whatever their time span होता है, वो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं. So the battle is not to win Big Boss. The battle is just to have a good impression on people. वो नहीं है तो वो फिर जो आप वो boy है। कैश प्राइज भी नहीं मिलेगा अब। Bro, you make जो triple थोड़ा times, सा man. अच्छा, by the way, this does make sense to me now. हाँ. कि why is the cash price so less? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। because Exposure of the देख रहे exposure that you're getting. ये वो Oh, बात है ना भाई, कि एक आज हमारे second. साथ काम कर लो, कल यार फ्यूचर में Also, काम guys, I hope ये you- जब मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट की थी ना, हाँ। तो ये जो बड़े वाले ब्रांड्स होते थे ना, जो पूरे पाकिस्तान में होते हैं, हाँ। वो ऐसे कहते थे कि कम पैसों में काम कर लो, आपको एक्सपोजर मिलेगा हमसे। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल Bro, ऐसी है। हमारे साथ तो अब Bro, तक ऐसे ही मेरे होता और है। तुम्हारे इंस्टाग्राम के सेम अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं। मैं तुम्हें एक्सपोजर दे रहा हूं। अच्छा सुनो, I hope you guys know that Big Boss contestants get paid to be on Big Boss. But doesn't Tamasha people get paid weekly as well? हाँ, they do. They get paid weekly do. too. Hmm, So everyone's Yeah. still I making got to money. know that as It's well. just yeah. आप अपना Yes. पूरा काम हाँ। छोड़ के आ रहे हो, आप जिंदगी में कुछ नौकरी bro, नहीं कर देखो, सकते, कुछ तमाशा नहीं मेरे कर ख्याल है सकते। फिर भी कम से कम भी ना 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी शो की, and ज़्यादा it's होगी। probably making 10. नहीं bro, ज़्यादा होगी. Like the channel is probably making I 10. feel like मेरे इसलिए ख्याल पता है क्या, शो वो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधा चैनल खोल लेना चाहिए. ओए यार, That's the best idea. हम चैनल मिलके खोलना चैनल मुश्किल खोलते हैं. काम है। TV मुझे बताओ, channel. तुम शुरू करो ना अगले साल पाकिस्तानी बिग बॉस। तमाशा बट पता है वो राइट्स नहीं मिलते उसके। ना मिले हम You कोई और don't नाम need से खोल rights. लेंगे. तमाशा ने ना rights ना दिए हैं. यार आप But देखो आप- नीचे लिखा होता है यार, कॉपीराइट्स ओन्ड बाय वो जो भी तो बिग ब्रदर Big Brother, आईएनसी। तो ये अगर YouTube पे कोई उस तरह शो, अब जिस तरह अजलान ने वो फनकार शुरू किया था रोडीज टाइप वाला,
you can open a similar concept on YouTube. You don't have to do the exact same thing. नहीं, I don't know I what think you get sued. वो Big Brother के बड़े specific rights हैं कि इस तरह के reality show के. नहीं, लेकिन देखो, for example, let me give you an example. Mr. Beast did a full Squid Game video. Squid Game थी क्या? Squid Games की उसने video की. It had more viewers than the whole show. Yeah. By the way. Yeah. सही है. I don't think he took rights. I No, think I he don't just think कहीं went लिखा हुआ भी नहीं था, out and description just में भी नहीं था. made the I think so. video. We could be wrong, but I don't think description में Because था. it's a different content piece. It's a different creative take on the whole thing. It's not like he didn't So reenact the show. maybe for television there could be rights. We have to look into it. Yeah, for television though. Also, Definitely. it's also YouTube पे possible शायद now. They also took permission to make it a bit official. You know how like Amir Khan made the copy of Forrest Gump. Yeah. ठीक है, तो like वो इससे आपकी एक वैसी fan following बढ़ जाती है ना. अब ये इंडिया में भी चल रहा होगा. Indian comments भी हैं. Also, उस I तरह feel भी हो like जाता है affiliation. if anybody could pull this off right now, actually, it's Ducky. Ducky can pull this off. Easy. Like hosting या तमाशा घर में जाना. Hosting, investing, everything. अच्छा हाँ, investing, hosting. चलो. क्यों? I feel नहीं, I don't. Oh, because Ducky is a phenomenon in Pakistan right now. No, like, that I no agree one, with. but- Yeah, but that I no agree one with. in Pakistan on YouTube has seen the amount of views Ducky is नहीं, experiencing but can- right but now. can Ducky- 100%. I just think that Ducky can't host. Let's be Yeah, real. मैं वही कहना को hosting bro is host. very different. No, I'm Yeah. no, like no, he's he, a good. He's a good daily businessman. vlogger. with, he's with good, media yeah. training, I think he can. With media training. With media training, he can. But चलो फिर 3-4 साल तक फिर. फिर बात वही हो जाती है कि like media training के साथ तो you can create the perfect specimen. Get it? You don't really need like. साले मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि वो अगर करेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी like I would rather see Junaid Akram hosting bro. उस तरह तो लेकिन YouTube मैं space व्यूज से. की बात कर रहा हूँ यार. देखो हाँ. मैं एक चैनल की Are you बात saying कर रहा कि हूँ YouTube जो पे खोले? मेरी बात सुन. हाँ. समझ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. समझो. मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हाइपर सक्सेसफुल चैनल हाँ. जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज डेली के आ रहे हैं. हाँ. आप उस तरह का चैनल लो, हाँ. उसके ऊपर इस तरह चला का दो. शो क्रिएट करो जो 30 दिन तक चले, जिसके अंदर 25 30 50 कंटेस्टेंट्स हो, हाँ. उनकी अलग अलग गेम्स हो. इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट मी. हाँ. It's doable. Sponsors will cover everything. True. And Because of the the channel. outcome is crazy because the views, अगर डकी के इस वक्त 2-3 मिलियन व्यूज पर व्लॉग आ रहे हैं, डकी के 10-10 आना शुरू हो जाएंगे. I'll actually give him a call and give him this But 10 idea. कम नहीं है. यार 10 भी अच्छा hit चलो अच्छा खासा खैर views. ये मतलब इतना मैं सिंपल नहीं होता. खैर. इस चीज के अंदर बहुत चीजें आती हैं कि डकी के वीडियोस के अंदर प्रोडक्ट वो खुद है, उसकी जिंदगी है. कोई और जब प्रोडक्ट बनेगा तो True. वो कंसिस्टेंसी नहीं बिल्कुल रहेगी. ये ऐसे वो ही है. इतना सिंपल नहीं होता. चलो आगे बढ़ो. आहो Frustrated क्यों हो रहा है? क्या? Frustrated क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आधी बातें रह गई हैं. अब मैं गुस्सा कर गया. तू ही तो बोल रहा है पॉडकास्ट में. तू ही नहीं बोलना चाहता था क्या? तमाशा के अगेंस्ट कुछ. मैंने तमाशा की बात नहीं की. उसके उसने बाद जनरल बात अच्छा, करनी थी. अच्छा बात बॉयज नहीं यार कर रहा एक था. सेकंड, मैंने फिर हम लोग ना थोड़ा आगे निकलते हैं हाँ. क्योंकि हमारे पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो हम व्हाट डू मैन अगले- वांट का जवाब ही नहीं मिला. हाँ हाँ, हम वो लोग ने भी ये तो बात कर शुरू रहे की थी व्हाट डू मेन वांट. हाँ. सही है. अब मैंने मेरी बात पैसा सुनो. बोला था फिर बस. पैसा की तुम लोग वीडियो यहाँ शुरू हुई पैसे थी. से तुम. अच्छा बॉयज होल्ड ऑन. What is the first thing you guys notice in a girl? I know it's a very generic question. लास्ट टाइम भी पूछा था. ये हो चुका है ना? हाँ हो हाँ. चुका. मैंने बोला था हर मैं फेस. बता रहा हूँ ये हो चुका है. नहीं बल्कि ये नहीं हुआ भाई. ये वजाहत भाई ने हमसे पूछा था उनके शो पे और उन्हें पूछा तो था बल्कि क्या मैंने भी ओ, किसी से मैंने पूछा. कहा था फ्लेक्स. क्या तो फ्लेक्स करने की कोशिश है. और नहीं. नहीं मुझे एक और शो में किसी ने Yeah, पूछा वो था. sorry. बे हम सबसे पूछा था बार. वो बे यार चाहत भाई ने मुझे पूछा बोलने था. दो भाई. मुझे बोलने दो. हम सबका शो था 12वां खिलाड़ी का. उसने हाँ. पूछा था और शावीर ने कहा था उसका आगे से जाके मुंह याद करो. याद आ गया. ये मेरे से किसी ने पूछा था, मुझे वाकई याद है. हाँ, ये कर वजाहत भाई ने रहा मेरे हूँ. को कंटेंट पूछा कॉपी था. कर रहा है. वजाहत भाई ने मेरे से पूछा था व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गर्ल. मैंने कहा हर स्माइल. कहते हैं अगर वो गुजर जा रही गई हो गुजर रही हो तो मेरे को भाग के जाके आगे से जाके. हाँ. Good answer. ये पॉइंट Nice. करो तुम लोग. पता But नहीं anyways, क्या. what's the first thing you notice in a girl? And be honest because this is honest The hour. way she talks. क्योंकि वो उसका एक्सेंट है ना अमेरिकन तो वो Yeah, एक्सेंट ही ये देखता है. मेरे लिए एक like चीज है. What's the first thing you notice in a girl? Like do you Her like eyes. girls who kind of like Her talk eyes. like this? Her eyes. No, like middle line होनी चाहिए. अच्छा वो Somewhere in the middle, like हाँ, दरमियान ठीक में है. उर्दू भी बोल ले थोड़ी What सी. would you Yeah, notice like, in a it girl? shouldn't यार be तुम like लोग she is talking like this all the time. obsessive You, क्यों what हो about एक you? दूसरे से? यार What about me? अपना Her podcast smile. start करने. Actually,
What about you? No, wrong answer. You What did don't you say, notice any Siraj? girls now. What did you say? Oh, editor. तुमने क्या बोला? Acha, उसने what do क्या you बोला? notice in a girl? What did he say पहले? He said smile. Smile. No, I her said eyes. I said Oh, smile. bro, I noticed her face. Her face? Yeah. Good boys, सबने गलत answers दिए. शाबाश. सारे boys media trained हैं. Good. नहीं, मैं ये चीज देख रहा नहीं, media trained- कि हम किस level पे operate कर रहे हैं ताकि मैं आगे के सवाल पूछूं. अच्छा, मैं वैसे genuinely ये बात एक कर- second. Hold on. 3 things that a girl should have. I have no idea what this question means. It's What? just written, so just 3 answer things it. a girl should have. I- Number 1, Doesn't matter. Okay, 3 things a girl should have. she should have a personality. Good. She should have goals, Goals. and she should have she should have A nice. A need- she should have good friends and family. Okay, how about this? Ah. We go around in a full circle and we say one word each. Okay. And let's see what the answer comes out to be. Sayyid. Manners. What? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ चलो Sentence build karo na. अच्छा, Sentence build karo. oh, सही है? oh. What are मुझे hold समझ on. ही नहीं आई थी Sentence building activity है boys. Okay. One word each. सही है? हम लोगों ने You like when couples therapy. या next question पे चलते हैं. उस पे sentence building. ये शावीर की तल चल रही है ना थेरेपी आजकल इसलिए सीख के आ रहा है कपल्स काउंसलिंग Okay, guys, listen. 3 things a girl should have in order to impress a guy. Go on. money. साले sentence Sentence? building कर You यार. should say. Let me start. A great. Oh, great नहीं एक word. Okay. Great. नहीं अभी नहीं ये इधर से है सदीक मेरी बारी है वापस बोल अच्छा इधर से जाएंगे. ह्यूज ओए बैक. Heart. And. चलो मैसिव ये काटना पड़ेगा. ये एक से hold on. The sentence doesn't make sense. नहीं a huge heart and a massive Smile. furthermore Comma. And. she Must. Have. gigantic I love how I get the adjectives करना ब्रो आगे चल. Gigantic. साले gigantic ली ही बोल देता मैं आगे add on लगा देता कोई. अब बोल आगे. Must have a gigantic मैं तेरी जगह gigantic abnormal. nose. Full stop. साले full stop is not part of the sentence. Sentence खत्म नहीं, हो नहीं, गया अब भाई. हाँ. ये sentence भी improper sentence हो जाएगी. furthermore Furthermore. वो बोलेगा ना अच्छा हाँ, furthermore. furthermore. she फिर मेरे पे मैसेज आएगा. ठीक है बात बोल. Has 2. B. humongously I'm full of words इसके सारे words big है बस. Thesaurus खोली हुई है इसने bro. सारे synonyms big के synonyms बोल रहा है बस. अच्छा आगे ना अब Humongously structured. Talented. नहीं, she नहीं. must have a Comma humongously. talented. नहीं, पूरी तरह से. And नहीं, मेरे पे हमेशा एक and ही second, आ मेरी रहा बात है. सुन. And is और में She चल रहा हूँ मैं must तब have- से. यही हो रहा है bro. मैं भी नहीं, She तो must has. She She must must have have- has to have. No, नहीं, humongously have- structured. humongously Humongously structured. तुम्हारे से क्या? birthday सिर्फ बॉडी बनता है और कुछ नहीं रह गया पीछे. Body. But down. अब dog क्या होता है? ये कट रहा है वैसे भी hopefully. नहीं क्यों कट रहा है? ना अच्छा बोल अच्छा, She हाँ. must have a humongously. Heart. structured Huge. humongously Structured. structured heart Humongously structured. Personality. हाँ ठीक है personality नहीं Humongously structured it doesn't make personality. Personality. नहीं. With. uh Juicy.
burger. And Moving forward, guys. and sex appeal. sex hyphen appeal. मैंने बोल दिया यार, Coma. तब से मैं फीड कर रहा था, किसी ने अच्छा मेरी जी। बेट ली. यार, do you guys think? By the way, तुम लोग के आजकल काफी दोस्तों यारों की शादियां हो रही होंगी. सदीत ने भी बोला, इसने भी बोला. नहीं मिलते मैं अब. अभी डांस प्रैक्टिस से यार. क्या तुम लोग को क्या लगता है कि मर्द हजरात शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ उनका बिहेवियर चेंज होता है या Yes. नहीं होता? यार डिपेंड आपकी दोस्ती, डिपेंड्स आपकी दोस्ती किस तरह की है. अगर आपकी दोस्ती, नहीं यार माइक दूर कर ले तो सॉरी की नहीं जरूरत पड़ेगी. अच्छा, अगर आपकी दोस्ती इस तरह की है कि आपके दोस्ती में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं और वेल डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ टू बी अराउंड ईच अदर, देन आई थिंक इट डजंट इम्पैक्ट एट ऑल. एंड आई थिंक विद लाइक अस, हमारी दोस्ती जैसे पहले थी शादी के बाद भी वैसे ही रही है. बस हमारे शहर बदल गए, हमारी काम बदल गए हैं, बट दोस्ती तो वैसे ही है ब्रो. हम आके वैसे ही चिल करते हैं, बात करते हैं, जो पहले करते थे वही करते हैं. आई एम श्योर कुछ लोग होते हैं जिनकी बदल जाती है, बट आई थिंक उधर फिर बाउंड्रीज अच्छी I feel defined नहीं this is होती. a special case because दोनों मियाँ बीवी are from the industry, kind of. किसमें इसकी Aisha's not from the Understanding है. industry. नहीं, she's a हाँ, but social media she influencer is ना. very What I understanding. mean is कि like you know understanding एक है, Yes. but I feel like in general like but understanding होनी भी चाहिए. Like आप अगर for instance कह दो कि like you know एक दिन आपका set है, आप boys के साथ हो, she's with her friends इस तरह ना करके, तो like you have your thing set. But in general I also feel like people pull away. Like I have a lot of friends बचपन के pulled away and like बच्चे भी बट हो वो गए, सब हो रिलेशनशिप्स गए, में भी मिलते नहीं. जिन लोगों ने पुल अवे होना था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ही पुल अवे हो जाते थे. True. Like they're not as लेकिन tight जरार तुझे वैसे. पता है शादी is a completely different animal. नहीं, आई थिंक आप द काइंड एक आपने किस तरीके का इंसान चूज किया है. अगर आपने बीवी ऐसी चूज की है जिसको नहीं मजा आता जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यू चोज द रॉन्ग पर्सन. दूसरा ये है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं. जिस तरह अब मेरे बचपन के दोस्तों, बचपन से आई मीन के OA लेवल्स के जो दोस्त हैं, उनमें से अब काफ़ियों की शादियाँ हो गई हैं, बट दे समहाउ फाउंड पार्टनर्स जो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सारे आज तक मिलते हैं. मेरे कुछ दोस्त हैं, सलमान वगैरह जो हैं, दानियाल वगैरह, वी मीट एवरी सैटरडे नाइट. अब उस ग्रुप के अंदर सलमान की शादी हो गई है, तैमूर की शादी हो गई है, उनकी बेगमें उनको आने मतलब कोई मसला नहीं होता. They come at 10 p.m. They leave at 4 a.m. They go home. Their wives are fine. मेरी क्लासमेट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर 3-4 दोस्तों की शादी हो गई है. एक का तो बच्चा भी हो गया. अब he just came back. He had a child. Came back from England. Spent 4-5 days at home. Guests वगैरह आ रहे थे. उसके बाद बॉय आ गया. उसने कहा बॉय से मिलना है. उसने कहा मेरे घर आ जाओ, मेरे बेटे से मिलो. ये वो इस तरीके से Understanding है ना. सो उनकी, बट उसके अंदर हमने भी ये किया है कि we've also become sort of friends with their wives so that they understand That's कि ये what- लोग जाते कहाँ हैं. Yeah. And boys हमने सही हैं. उनकी बीवियों को भी वो सिक्योरिटी दी है कि यार अच्छा ये जा रहा है तो ये मेरे घर आ रहा है. Yeah. क्या करते हैं हम सारा रात गेमें खेलते रहते हैं. That's pretty much it. So I feel like कि जो boys जिनको शौक होता है अपने दोस्तों से मिलने का या अपनी जिंदगी को एज इट इज कंटिन्यू करने का विद द एडिशन ऑफ योर वाइफ, वो कर लेते हैं. The same That's way true. our dads still have friends from college Yeah. और वो लोग मिलते हैं और वो चिल True. करते हैं. That's true. वही है ब्रो, बनता है. I feel like एक boundary सब boundary भी नहीं, सबके इसको understanding लोगों है, ने bro. वैसे ही मिस कराना था, शादी तो एक बहाना था. तो like no, I generally feel bro like I have a lot of friends that got Joke married था and भाई. like नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि like I have a lot of friends that got married and like वो मिलते भी नहीं है वो and like it's not just them, they're the couples calling this out, it's also their families that are involved. Like a friend of mine's parents says कि नहीं जब उनकी शादी होगी तब मिलोगे, मिलना ही नहीं. Like I have to get married now to go meet my friend who is married. Like what ये That doesn't होती make नहीं sense. कौन सी अजीब फैमिली. Yeah, I mean, like in and these some aren't cases, and what sucks is these are very well educated and like, education doesn't matter. here. ruling family type families. रूलिंग elite 1% Ruling top. हाँ like मतलब ये stupid अच्छा as fuck नहीं वो है. कह रहा था Actual रूलिंग समझदार टॉप लोग हैं. 1% जो है ना उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो मिलने नहीं दे रहे इससे यार. तो रूलिंग elite. But like I mean it's weird to see like you grow up with people and रूलिंग then elite एकदम से फैमिलीज में mindset बड़े change मसले होता होते हैं है. ब्रो. Like that person इस तरीके के मैंने बड़ा नोटिस किया. अच्छा. हाँ इस तरीके की जो जिनकी तुम कह रहे हो ना कि बहुत ज्यादा अमीर फैमिलीज, हाँ हाँ देयर some other level of fucked up, bro. true 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 Like I've seen some really weird shit happen. मतलब you don't say it to them, yeah but you I've can't. known people growing up इस तरीके के. But and if you say it to them फिर दोस्ती खत्म हो जाती है. नहीं वो बस आप
I just give it के अच्छा ठीक है उनके Like खानदानों में यार यार फैमिली स्ट्रक्चर शादियों में के मामलों में और इस तरीके जिस तरह इसने कहा है कि वो इतने पढ़े लिखे अमीर लोग हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जब तक शादी नहीं करोगे तो लाइक बीवी को सामने नहीं लेके जाना इवन दो you've known both of them for instance in this example before the wedding you knew both of them you're tied with both of them नहीं मैं उसकी बात ही नहीं समझ पाया कि वो शादी से पहले क्या शादी जब तक नहीं करोगे तब तक क्या उसने कहा ना कि मेरे दोस्त की शादी हुई है और वो अच्छा। अपनी बेगम से नहीं मिलवाता कि जब उसकी शादी नहीं वो हो खुद भी नहीं मिलता उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब तुम्हारे उन लॉन्डो लड़कों की शादियां होंगी देन यू गाइस कैन कंसीडर मीटिंग इट्स नॉट इवन कि बीवी से भी दोस्ती है लड़के से भी दोस्ती है घर वालों से भी दोस्ती है तो उसके माँ बाप को ये कहना चाहिए What I mean to say कि is कि parents ਤੁਸੀਂ also control ਕਿ this ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਤਾ आप अभी तक उसको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना कि बेटा आप इससे नहीं मिल सकते Bro, and this is also like another thing that I want to say it's very stupid कि like you know parents control everything like हाँ ये तो अपना अभी भी बच्चा है यार बच्चे का बच्चा हो गया बच्चा 30 साल का हो गया अभी भी वो बच्चा but you'll always find a baby in them they'll always be dependent on somebody or if somebody they're pregnant you'd find a baby in them बट नहीं इसके अंदर बच्चों का खुद भी नहीं होता कि अपने पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करना ग्रोइंग अप बच्चों की ब्रो यार with क्या 30 साल के मर्द हो गए अभी तक तुम्हारी अम्मी तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल यार मैंने ये एक चीज देखी है वैसे या तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल यार ये देसी कल्चर के अंदर बहुत है ब्रो लाइक उसकी वजह भी ये है ना कि you don't really move out of the house देखो जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर स्टैंडर्ड ये है कि 18 19 20 के बाद you usually get a girl and you just move out of the house you get like a nice place for you and your upcoming family or not depending on how that relationship goes or alone but it's expected off of you कि आप काम करो 18 के बाद आप यानी कि देखो dependency and see the world हाँ dependency is not a good thing because everyone यानी being dependent on somebody or somebody is not a good thing हर इंसान को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि 18 20 25 के बाद यानी कि जब भी उसका टाइम आए उसको फील हो मूव आउट यानी कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना सीखो यार फिर सोच वो आ जाती है ना ब्रो कि लाइक यू नो लड़की की तरफ लग गया है उसके नीचे लग गया है ससुराल वाले के नीचे लग गया है फिर ये चीज आती है हमारा देसी कल्चर में डायनामिक्स बहुत वियर्ड है वो तो शादी की चीजें हैं मैं एज अ ह्यूमन बीइंग के आप 25 साल के हो गए और ठीक है आप अपने बाप के माँ के घर में रहते हो आप अपने पैसे कमाते हो आप अपनी चीजें खरीदते हो अपनी ग्रोसरीज खरीदते हो एवरीथिंग but your parents still control what you do I think because how you meet your what time you're going home property finances या गाड़ी किसी तरीके से आपके सर पे है आप हमेशा उन पे डिपेंड अगर कोई 1.5 लाख कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है महीने का वो खर्च 10 लाख रहा होगा वो बाकी का 5 कहाँ से आ रहा है माँ बाप के कार्ड पे ही आ रहा है ना उनकी तरफ से आ रहा है it's because there's very less people that are very independent or they actually put money into their households. We know so many people who earn so much यार money. सेल्फ रिस्पेक्ट होना तो कोई इंडिपेंडेंस से मतलब वो नहीं है. You cannot be taught self respect or how you should. सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने माँ बाप के सामने भी आपकी होनी चाहिए. You can be. I think it comes from experience. No. I've gone through an experience that got me to a position where I literally made a promise to myself never again I will ask for money from anybody ever. But you had something that happened. Of course. Or तो वही कह रहा ना you want to know it just happens no one's bro going we to went teach to them to be हम लोग डॉलर स्टोर गए हम लोग this was the time when we were not doing good as a family financially right हम लोग groceries करने डॉलर स्टोर जाते थे कनाडा के अंदर हम लोग डॉलर स्टोर गए I think I was maybe 13 or 14 तो वहाँ पे मुझे ख्याल आया हालात देख के कि यार मैं क्या करता हूँ एक जॉब होती थी it's called nickel picking I think or coins picking उसके अंदर ना आप रोड पे जाके the found ones आप रोड पे जाके ना सिक्के कलेक्ट करते थे अक्सर गिरे होते थे वो कर करा के अगर आप पूरा दिन काम करो 8-9 घंटे तो आपके पास इतने पैसे हो जाते थे कि $5-6 आपके बन जाते थे इसी तरह घर के अंदर मुझे अक्सर नजर आता अमीर मुल्क है $5-6 जमीन से इकट्ठा हो जाता था यहाँ पे जाओ पंजर पे नहीं जो मिलने यार तो क्या मेरा अंदर इनपुट कट ऑफ जी सर सर हम कभी कनाडा गए नहीं ना हम इसी तरह आज जीते हैं कनाडा को हम सुनते हैं हम कहते हैं देखो यार जमीन तो $5 I get what you're saying bro I get what you're saying I get it 1500 होता है
But I feel like at the ये end, क्या अमेरिका गया I feel like at the end in सब में ना नहीं उसकी तरबियत बात तो का असर कंप्लीट होता होने दो भाई वो कहता है, खराब I इसलिए get है, it. मैंने तो पॉइंट no what I mean to say is कहता है, I got कि it. इसमें it's your parents की तरबियत and what they've taught you. ओ यार No, मुझे no, स्टोरी that सुनने दे came into स्टोरी you. तो बताओ फिर तेरे वो पैसे भी काम जमा है, हुए लेकिन कि हाँ, नहीं? sorry. ये करते हो यार, तुम it's not about collecting मैंने money. कमेंट करके नहीं, the मुझे story was not I about know it's collecting about money. the life lesson. हाँ, जी। so basically I was like यार हम लोग डॉलर्स हो जाते थे तो मैंने कहा यार मैं ना एक वो पिगी बैंक खरीद लेता हूँ उसके अंदर कलेक्ट करके when I have $100-200 I'll give it to my dad and I'll surprise him. Nice, Okay, look, cute. Papa, I made $200. Still remember this. I picked up the piggy bank. I put it in the cart. उसके अंदर 3-4 और चीज़ें पड़ी हुई थी. We go to the counter, and my dad wasn't looking when I picked it up. So when we were scanning the items, the lady scanned the piggy bank, and it was for $1. तो पापा कहते ये किसने लिया? मैंने कहा मैंने लिया. तो वो कहते बेटा ये रख दो अभी इतने पैसे नहीं है. मुझे उस दिन ख्याल है हमारे पास $1 भी नहीं है. उस दिन मैंने 2 चीज़ें सीखी. एक तो वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट एकदम सामने आ गया कि पैसा इंपॉर्टेंट है भाई. जो लोग भी कहते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो गलत कहते हैं. पैसा इंपॉर्टेंट है टू अ सर्टेन लेवल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वाइटल फॉर लाइफ एक्चुअली, राइट. दूसरी चीज़ मुझे उस दिन मांगने में इतनी शर्म आई ना. दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एवर. हमें पॉकेट मनी मिला करती थी लेकिन वो वॉलंटरी होता था, यानी वो मांगी नहीं कभी, वो मिल जाती थी. मुझे एक ख्याल आया कि यार मैं मांगता हूँ एक चीज़ और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी काम करने की. लीगली आई कुडंट वर्क बिकॉज आई वाज 13 और आई गॉट पुट डाउन लाइक दैट बिकॉज ऑफ नो मनी इन द बैंक. आई वाज लाइक fuck this. I was like 2 rules in life. Will never ask for money ever ever ever. Number 2, will make enough money to support me, my family, whoever needs it from me. That was my lesson for life. Okay. That was it. And that came super early and I'm so glad that it came at the time where I needed it the most. Yeah. Had that not, that was like, kick in the ass kind of a situation where, yo, life is tough, beta. Yeah. It's not, तुझे घर पे बैठ के सामान नहीं मिलेगा, True. तुझे उठ के काम करना पड़ेगा. True. And I think that was the day I made a decision as soon as I turned 15. I'm going to start working. And that was the day I started working at the age of 15. And I don't think I've ever been unemployed since. Yeah. Can No, I ask that's a great story. Can I ask like a question to relate to Yeah, this? sir, Like, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं Another नहीं podcast तू बोलने है. लगा था ना मैंने कहा नहीं फिर नहीं I don't आप wanna सर cut you बोले off. What I आप mean ही is कि बात like बोले. what I want to say is कि like so do you think कि you realize this, right? I personally feel like my opinion is people don't realize this here. People think it's easy to blame कि हमें opportunity नहीं मिल रही. Because कुछ people are करने की. hand-fed here. हाँ. And like अगर किसी के घर में कोई मसला हुआ है पैसों का, they're not going to go out and try and earn it. They're just going to be like complain and they're going to be like God isn't giving us an opportunity or this person isn't giving an opportunity, which is an issue. Which I सर feel वैसे like. एक बात ना प्लीज ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ना हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं. हाँ. और शावीर बेशक अंडर प्रिविलेज था एट अ पॉइंट वेयर ही कुडंट अफोर्ड अ पिगी बैंक. डोंट फॉरगेट ही लिव्ड इन कनाडा. पाकिस्तान के अंदर वाकई ही अपॉर्चुनिटी नहीं है. द मिनिमम वेज जॉब्स आर एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट. That is true. मतलब जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, घर नहीं चल रहा, जाए यार. वो लाइक जरूरी है कि जाके काम करे. 30-40 हज़ार रुपए महीना कमाए, जो कि 40 भी नहीं देता मिनिमम वेज. मैं अभी वही भी कह रहा हूँ, लोग नहीं करते. 30-32 हज़ार रुपए आपको मिलती है. वो भी हाँ. अगर कोई अच्छे एम्प्लॉयर्स हो, नहीं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई 25 हज़ार या 22 हज़ार लो. अपॉर्चुनिटी नहीं है. हमारे लोग यहाँ बेचारे क्या काम करें? अगर जाके मिनिमम वेज 30 हज़ार काम करेंगे, 30 हज़ार रुपए में क्या होता है भाई? अगर वो काम करता था कनाडा में 15 साल की उम्र में, हाउ मच मनी डिड यू मेक? Started at $5 an hour. $5 an hour. How many hours a day and like month में कितना बन जाता था? Roughly 10 hours a day or 8 hours a day. $50 a day. 40 hours a week. 40 kind hours of a week. situation. That is $1,000-1,500 $200 एक महीने में Hmm. और $800 नहीं $200 एक हफ्ते में, $800 एक महीने में. Hmm. $800 उस टाइम पे भी कनेडियन डॉलर की वही वर्थ थी, आज भी वही वर्थ आप है. लेकिन वहाँ की इकोनॉमी यहाँ से कंपेयर नहीं कर रहा. $800 was not- बट वो $800 15 साल के बच्चे के लिए बहुत पैसा है. $800 वहाँ पे कुछ भी. नहीं है. प्ले स्टेशन 3 जब आया था 2007 के अंदर, 2008-6-7 के अंदर प्ले स्टेशन 3 आया था, तब भी वो $200 का था, $250 का था. वो बच्चा तब वो अफोर्ड कर सकता था अपनी मर्जी से प्ले स्टेशन. यहाँ पे जितने का प्ले स्टेशन है, अगर बच्चा इतने पैसे कमाए पर महीना, तो आपकी इकोनॉमी नहीं है कंपेयर कर सकते. वो उस या 2 वक्त लाख अपने का घर की ग्रोसरीज भी $800 में पूरे महीने की ले सकता था. पूरी की पूरी घर की ग्रोसरी कर सकता था. तो नहीं ब्रो, नहीं है पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान के अंदर जो लोग
जिस तरह भी जिंदगी गुजार रहे हैं उन लोगों को सलूट है, उन लोगों को सलाम है. मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि यार आप घर बैठे हो अपनी ऐप Yeah, पे. that being said, मैं तुझे बात बताऊं Khaqan, that being said, I agree with what you're saying technically. But I disagree with you in the way exactly how I would disagree with somebody who is saying कि यार because there are no opportunities, we're not gonna try. I feel like नहीं, ये नहीं in मैं कह order रहा. to, I'm not I saying feel that. like feeding a lie to somebody, and if that actually gets them moving, is a good lie. I feel like saying to people that there are no excuses not to work is a good lie, even if there's actually no work, or if there's not equal opportunity. Yeah, no. Point being कि यार अगर आप लोगों को यही समझा दोगे ना, देखो ये ना लोगों को डिप्रेस कर देगा. ये बात ये लोगों को डिप्रेस कर देगी कि यार हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, देयरफॉर यस हम लोग अब तक काम नहीं कर पाए. हाँ ठीक ही है ना, मैं है ही नहीं. बट हाउ वुड यू देन स्टार्ट मूविंग? You won't, because you'll just sit at home. No, So I agree with you technically, but I also do agree with Sadeed, yeah, where he's saying कि कि कुछ यार तो करना चाहिए. निकलो हाँ, करो you भाई, can कुछ sit on ढूंढो. your ass. यानी कि आप You should do. I think वो भी यही कह रहा है. वो बस मैं भी यही यही कह रहा हूँ like, कि यार मैं बस ये कह रहा हूँ कि comparison हाँ गलत हाँ नहीं, I वो say नहीं कर सकते. it's a wrong comparison. हाँ. कभी भी आप ये नहीं कह सकते यार कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना जो घरों पे बैठे हैं. मैं कह रहा हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट को हमेशा जहन में रखना चाहिए और प्रिविलेज डिस्कशंस के अंदर कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि लोग बस ना बैठे हैं और कुछ करते नहीं है. ब्रो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो बहुत मेहनत करते हैं. यू गो आउट ऑन द रोड, जो बंदा करीम चला रहा है से लेके जो बंदा तंदूर पे काम करता है ब्रो बहुत मेहनत करते हैं फॉर नथिंग. मैं बस कह रहा हूँ कि हमेशा जरा एक वो रखना चाहिए कि हाँ यार हमारे मुल्क में एक थोड़ा बैड सीन है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, डू व्हाट यू आर डूइंग. हमें पता है कि यू आर अंडरपेड, वी नो दैट यू आर अंडरपेड, लाइक इवन वी आर अंडरपेड, क्योंकि हमारा मुकाबला आपसे नहीं होगा. हमारा मुकाबला उनसे होगा जो कनेडियन यूट्यूबर्स या कनेडियन एक्टर्स हैं. उनसे हमारा इससे हमारा पता चलता है कि हम कभी कहीं नहीं गए हुए, कि हम कनेडिया टाइप चीजें करते हैं. बट कनाडा के जो एक्टर्स हैं यूट्यूबर्स, कनाडा के जो एक्टर्स और यूट्यूबर्स हैं उनके मुकाबले में हमें भी वी आर आल्सो अंडरपेड. सो या दिस इज द कंट्री वी लिव इन. आई होप यू मेक इट. अगला कोई पॉजिटिव सवाल पूछो. आपका क्या सवाल है यार? इसको ना थोड़ा सा फन पे लेकर आते हैं, दुखी बात है, डिप्रेसिंग नहीं. अच्छा बॉयज, एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द आंसर अफेयर. Have you guys played that game? I don't do affairs. Double A? It is double-edged. Double X? Double A is double-edged. Boys, what are some things, and we're gonna go one by one, and everybody gets to answer, okay? What are some things that you can say in the bedroom and at a family dinner? Yes, daddy. Why was this ready? तू ready क्यों था? एक सेकंड, मतलब यार मुझे बात नहीं समझ आई. You have to double meaning चीजें जो आप कह सकते हो बेडरूम में भी और फैमिली गैदरिंग में. डबल मीनिंग नहीं, एक ही चीज आप दोनों जगह पे एप्लीकेबल है. यार बंदा कट छोड़ दे नहीं सही सी यार. मैं पता क्या कह रहा हूँ यार, मुझे बात नहीं समझ आई. बेडरूम में क्या मतलब? मैं उसे तंग कर रहा था, वो एक्सप्लेन तो करे. बेडरूम में क्या? अच्छा, बेडरूम टॉक नहीं होती जो, यानी कि बेडरूम के अंदर आप गुफ्तगू आप अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ आप कुछ कह सको, और एक फैमिली डिनर ओकेजन टाइप जगह पे भी कह सको. यस डैडी वाज वेरी एक्यूरेट. व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं बोलूं? उसको उठाओ. अच्छा, मेरे पास भी है. मैंने सोच लिया. उसको डिश उठाओ, लजानिया की डिश पास करो, उसको उठाओ, रोटी उठाओ. याद है स्कूल में सर इसका खड़ा करके निकाल दे. दोबारा बोल सर इसका खड़ा करके बाहर निकाल दे. यार मुझे याद है मेरी अम्मी पॉडकास्ट देखती है. ये काट दी भाई. अच्छा, मेरे पास भी है. You really want to try that? सही. Good. I expected you to be the funniest. अच्छा, ये बेस्ट बात बता. एक और भी है. What is one thing you can say in the bedroom, at dinner, and to Hashir? यार ये ना ट्राई करिए, इसके अंदर मछली है. Wait, what? इसके अंदर context needed, please. I do need a context. क्या यार देखो, क्योंकि उसने फिश खाई. हाँ नहीं, हाशिर वाली बात मुझे समझ आ गई. अच्छा, हाशिर bedroom dinner नहीं. What is something that Hashir would say? It could be said in the bedroom and it could be said at a dinner.
हाँ. यार ये नहीं मैं ट्राई करूंगा, इसमें से शावीर भाई मछली की बू आ रही है. हाशिर कहता ना ये कि मैं नहीं ये खाऊंगा, इसमें से मछली की बू आ रही है. जवाब पे पानी गिर जाए. I'm wet. नहीं आप आप पे. Bro, what's your answer? What's your answer? Spicy. The answer wasn't spicy. That was spicy. But a Josh. नहीं ये एक और. You're done already? Good one. That was good. पहुंच गए आप भाई. Have some Acha, more. what is things you can say in the bedroom and in an interview? Let's begin. I think I'd be great at this position. Job interview. अच्छा मैंने वो मीडिया वाला इंटरव्यू है. अच्छा. How big is my package? When will I have नहीं. What? मैं सिर्फ होस्ट कर रहा हूँ, remember. सही है. मैं होस्ट हूँ इस पॉडकास्ट का. नहीं रुको ना, इंटरव्यू वाली ये मजे किया. और भी चीजें हो सकती हैं. You can sit right here. नहीं let's begin from the top. ये भी कह सकते हैं. गुड, ये अच्छा सेगमेंट है यार, ये अच्छा सेगमेंट है. ये दिमाग सही चल रहा है. अच्छा, bedroom and in a concert. In a concert. That was a good performance. Danny. डैनी की याद में बोल रहा हूँ. End segment. नहीं. Didn't know Ali Zafar is performing. ये segment की shorts अच्छी हो. This was nice. Didn't know Ali Zafar was performing. अरे अली सफर भी अच्छा खासा कर He's लेता not है. that good live. सोचो ये निकले पॉडकास्ट, अली भाई की कॉल है. खाकान मैंने वीडियो देखी शावीर की. वॉइस नोट आएगा. Bedroom and while driving. While driving? No, not there. Oh fuck. अच्छा ये देखो, वाइल्ड यार गियर तो सही लगाओ. No, don't stop now. अच्छा अगर आप किसी के साथ बैठो से ड्राइविंग नहीं आती, यार इतने झटके. We're getting late. Go faster. ये भी अच्छा. और किसी को ना ड्राइविंग नहीं आती, उसे सिखा रहे हो, यार क्लच जोर से दबाओ. That's it. That is. ये बस. हाँ यार. I can There's make another it. one. I There's can another make one. it. There's another one. Bedroom and exam hall. Really? Please put your Time's phones up. away. ये syllabus में नहीं था. Please. ये syllabus में नहीं. सदीद ने पता है क्या कहना है, ये चैप्टर तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं. Can I get extra sheets? Where do I write my name? ये अच्छा था. ओए हाँ. यार एक्स्ट्रा पेन है, मेरी इंक लीक हो गई. ये भी अच्छा है. यार तुझे ऐसे कभी पॉडकास्ट पे पहले सेगमेंट हुए हैं ये? नहीं. हाँ अच्छा बात मैंने नोटिस किया. एक और सेगमेंट है रिडल्स का. Do you guys want me to go for it? नहीं रुको, मैंने You have no मैंने हिसाब fucking लगाया idea what कि the- ये जो है ना सारे बाकी गेस्ट के साथ तमीजदार इंटरव्यूज करता है, गलीज गलाजत हमारे से ये बचा के रखता है कि ये आएंगे. पिछले पॉडकास्ट से सवाल अभी तक पड़े हुए थे. ये Boys, हामी हैं. I think
That was यार वो all. पिछला segment बहुत अच्छा था. हाँ, वो मजा आया. That was nice. ओ यार मेरा वो वैसे favorite था अगर वो- sentence making. हाँ, Ah, वो भी अच्छा same, था, same. वो भी Do you अच्छा guys था. want to end it with sentence making? हाँ, Sure. We can let's- end the podcast with sentence making. Let's go. Yeah. All right. That's All. For Today's podcast. And give my Huge. शर्मा रहा है. Thanks. साले तूने इतना सोचने के बाद Sorry. thanks बोला. ला लो तो. बोल ही नहीं सका. Thanks. to Someone Who Is stupendously and amazingly and moistly gentle. with मैं वही बोल शावीर. क्या है शावीर. tiny tiny चल शावीर आगे बोल जल्दी जल्दी. प्लांट किया करो Nose and Is micro organisms. attached. पढ़ लेता सू. हाँ 2 हो सकता है. हाँ. 2. the Friend. Yeah. Friend. Attached to the friend. Guys, we can't ये think लंबा हो this गया, long. ये लंबा हो गया, बहुत लंबा लंबा हो गया. सोचता बस तुम L बस नहीं. यार अच्छा मजा ना नहीं आया. यार खैर, Sneeze anyways, ने. बहुत कोशिशों के बाद हमारा सेंटेंस अभी भी मिडवे है. होपफुली नेक्स्ट लॉन्डा टॉक पॉडकास्ट में हम इस सेंटेंस को और बहुत सारे शुगली कॉन्वर्सेशंस को जन्म देंगे और फिनिश करेंगे इंशाल्लाह. Guys, thank you so much. Zarar, Khaqan, Sadeed, thank you so much for making it to this year's last, hopefully not last, this month's last Londa Talk podcast. And sorry to everyone who was wanting Londa. talk yeah Londa talk. They I mean, wanted- sorry to I everybody. think we क्योंकि लोगों ने कुछ 6-7 महीने I इंतजार think किया. Londa talk 4 Shahveer महीने बाद shuffle किया, करते I रहा करो तुम. You can do it with other Londas. We don't mind. We're not possessive. True. I True, don't true. have Londas like you guys, na? ओए हाँ ओए, ये हरामी. That's the ए thing. तू वाले पहली बार ही आया हो. मैं इसलिए तो कह रहा हूँ. ये Any is it? और- Any और just- I think Sadeed definitely did add some sort of value to it. यार I love how you had to think about it. हम फिर sentences बना रहे हैं. अच्छा नहीं पर Took him long. मैं Sadeed मुझे added value to it. ब्रो मैं दिसंबर में जो हूँ मैं लाहौर में ही हूँ. सियालकोट लाहौर के दरमियान हूँ. दिसंबर में मेरे भाई की शादी है तो हम दिसंबर में भी लौंडा टॉक करेंगे. नवंबर में मेरी हमें सालगिरह के monthly टाइम पे technically एक करनी चाहिए. मैं because- नवंबर में Bro, आऊंगा. people do love this stuff. Like they अभी just हम leave a बहुत हैम्पर्ड अच्छे इससे होते positive हैं क्योंकि comments. खाकान लाहौर में बहुत कम होता है. हाँ. So और hopefully he'll be Daniel in भी. Lahore more. Daniel, who was the 4th Londa, is missing. He's in US shooting with ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में है. Londies. बहुत लॉन्डीज के साथ वो इस वक्त बिजी है तो वो इस वक्त आ नहीं सका हमारे साथ. बट एनीवेज, थैंक यू टू दीज ब्यूटीफुल जेंटलमैन ओवर हियर assisting us and Londa Talk episode number 3. More to come, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching and we will as always catch you in the next one. Peace. ये साइन याद रखें. Where Bye over? bye. ये let's go. नहीं ये याद नहीं उसका ज़रार के जरार के पैर इस तरह के हैं जो लोग भूल चुके हैं. मैंने फाइनली एक दिन गलती से एक पोस्ट में अपने पाँव दिखा दिए ब्रो. और वो लोगों ने मुझे पकड़ ली. इतने मैसेजेस आए थे कि फाइनली योर फीट. Yeah, so on Anyways, this note, ladies and gentlemen, thank you Love so you much once guys. again. Subscribe करना मत भूलिएगा and we will as always catch you in the next one. Bye. bye bye.